In the lung meridian, we have most important point, lung 1, 5, 6, 7 and 9. हमारे लंग मेरिडियन में ये 5 बिंदु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. These 5 points are most important in the lung meridian. So let's start with the lung 1. हम lung 1 की बात करते हैं. अगर हम lung 1 की बात करें, so let's see in this image the location of lung 1. Lung 1 point is not attached with the collarbone. This point is not attached with the collarbone, but it is 1 chun away from the collarbone. So remember this thing कि lung 1 हमारा point collarbone से attach नहीं होता, बल्कि इससे 1 चुन नीचे होता है. So this is the thing number 1. If someone asks you, if I ask you, tell me the location of lung 1, so your reply should be, it is 1 chun down from the collarbone. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लंग 1 कहां होता है, तो आपको कहना चाहिए कि हमारी कॉलर बोन से 1 चुन नीचे होता है, कॉलर बोन से लगा हुआ नहीं होता. सेकंड, द लंग 1 point found 6 chun away from the central line. It is a 6 chun away. हमारी सेंट्रल लाइन से 6 चुन की दूरी पर पाया जाता है. ओके, नंबर 3, वी कैन सी द डिप्रेशन हियर. वी कैन सी द डिप्रेशन हियर. यहां पर हमें एक डिप्रेशन महसूस होता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिप्रेशन? इस डिप्रेशन का नाम क्या है? सो दिस कैन बी टोल्ड deltoid, because we have deltoid muscle here. Because we have deltoid muscle here. Then pectoral, because we have pectoral muscle in the chest. Fossa, fossa. So this part is called deltoid pectoral fossa. We can see the fossa here. अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एक हल्का सा खड्डा मिलेगा. You will find one ditch here. इस डिच का नाम क्या है? इस डिच का नाम है deltoid pectoral fossa. So this is the deltoid muscle, and this is the pectoral muscle, pectoralis muscle. The chest muscle is called pectoralis muscle, and this is the fossa in between. So this is called deltoid pectoral fossa, and lung 1 point is here, and it is not attached with the collarbone. लंग 1 point यहां होता है जो हमारी कॉलर बोन से अटैच नहीं होता, बल्कि उससे 1 चुन डाउन होता है. नाउ if you go from the central line, it is 6 chun lateral from the central line. If you measure from here, so like 3 chun and 3 chun, so we will reach on the lung 1. Why the lung 1 is very important? One more thing about the lung 1 we should remember. एक चीज और भी है जो हमें पता होना चाहिए लंग 1 के बारे में. So let's see this image. If you look at this image, so this is the collarbone. ये हमारी collarbone है, और collarbone से 1 चुन नीचे हमारा lung 1 है, that we know. So this is the location of lung 1. And lung 1 is 6 chun away from the central line. हमारे central line से ये 6 चुन की दूरी पर है, 6 chun away. Now this point is below the first rib. This point is below the first rib. So these are the few things about the lung 1. Number 1, it is not attached with the collarbone, but it is 1 chun down from the collarbone. तो पहली बात है कि हमारी collarbone से attach नहीं होता, बल्कि उससे 1 चुन नीचे होता है. Second, it is 6 chun away from the central line, means हमारी central line से 6 चुन की दूरी पर होता है. Third, it's below the first rib. ये हमारी पहली rib के नीचे होता है. And why the lung 1 is very important? The reason is this: the lung 1 point is the alarm point of the lung. So lung 1 point is the alarm point of lung, or the mu front point of the lung. Mu front point of the lung. तो जब भी लंग में कोई भी तकलीफ होती है, इस पॉइंट पर दर्द मिलता है, और जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो लंग की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. So when anyone is suffering with any types of lung disorder, we will find the pain here, and the pain, if there is any types of lung problem, and if we stimulate this point, then the problem
then we will see the benefit. So this point is not only for treatment, we are using this point for diagnosis प्लस ट्रीटमेंट. तो हम इस बिंदु का प्रयोग दो चीजों के लिए करते हैं, पहला डायग्नोसिस के लिए और दूसरा ट्रीटमेंट के लिए. नाउ if we take the lung 1 point, that is the front mu point, and we take the backsu point of lung, backsu point that is urinary bladder 13. अगर हम लंग का फ्रंट व्यू पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है लंग 1 और लंग का हम बैकसू पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर 13. So this is the wonderful protocol for all types of lung disease, if whether the acute or the chronic. If we are taking the front viewpoint of the lungs as well as for the back viewpoint of the lung, this point protocol wonderful for all the problem of the lung, whether the acute or the chronic. तो चाहे acute problems हो या chronic problems हो, इन सब के लिए ये 2 point formula बहुत ही बेहतरीन काम करता है. So this was the quick summary of the lung 1. Let's move to the next point, next important point, that is lung 5. Okay, so before talking about the lung 5, first I would like to tell you the location of biceps muscle. पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि the location of biceps muscle. तो let's see the location of biceps muscle here. तो हमारे biceps muscle को देखिए, ये हमारी जो फ्रंट साइड में होती है इसे हम कहते हैं the biceps muscle. So biceps muscle having two parts, so that's why it is called biceps. The meaning of bi is two, and the meaning of bi is two, and the meaning of seps is equal to head. So this biceps muscle having two head, so we are telling it biceps or two head muscle. So we can see there are two head here, one head is this and one head is this. इस मसल के दो सिर होते हैं, दो हेड होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इसी कारण से इसे हम बाइसेप्स कहते हैं. Now the most important thing is here, when the biceps muscle is coming down, look at here, when the biceps muscle is coming down, look at here, जब बाइसेप्स मसल नीचे आती है तो बाइसेप्स मसल का ये छोटा सा टेंडन होता है. लुक एट हियर, द बाइसेप्स मसल हैविंग स्मॉल टेंडन हियर ऑन द एल्बो जॉइंट. तो बाइसेप्स मसल का यहां पर जो ये टेंडन होता है, इट इज वेरी हार्ड. दिस इज कॉल्ड बाइसेप्स टेंडन. दिस इज कॉल्ड बाइसेप्स टेंडन. एंड व्हाट इज टेंडन? द मीनिंग ऑफ टेंडन, structure who is connecting bone with muscles, they are called tendon. So the biceps muscle are connected with the bones with the help of this tendon. So this tendon is called biceps tendon. Now look at your hand, अपने हाथ में देखिए. Now try to feel your biceps tendon in your arm. So look at the arm, you can feel the tendon here, very hard structure. यहाँ पर आपको एक हल्का सा टेंडन महसूस होगा. तो ये हमारी बाइसेप्स मसल है. दिस इज द बाइसेप्स मसल. और बाइसेप्स मसल का ये जो टेंडन है, दिस इज कॉल्ड बाइसेप्स टेंडन. ओके, नाउ देयर इज वन artery is going from here. The name of that artery is cephalic artery. Cephalic artery. यहां से एक हमारी cephalic vessel. Cephalic vessel is the better structure. तो यहां से एक cephalic vein करके जाती है हमारी cephalic vein from here, because arteries are very deeper but vein are superficial. So in the elbow, in the center of elbow, you should remember two things. Number one, bicipital groove, and number two, cephalic vein. Now if I ask you, tell me which acupuncture point is on the lateral side of the biceps tendon, so the answer will be this is the biceps tendon, and the lateral side of the biceps tendon, this is the lung 5. Lung 5. Okay, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बाइसेप्स टेंडन के लेटरल कौन सा पॉइंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बाइसेप्स मसल ये है, इसका टेंडन इधर है, तो ये पॉइंट होगा लंग 5. दिस इज द लंग 5. द अनदर क्वेश्चन, ओके, टेल मी इन द एल्बो व्हिच पॉइंट फाउंड जस्ट नेक्स्ट टू द सिफेलिक वेन. तो हमारी सिफेलिक वेन यहां से जाती है और इसके बगल का जो पॉइंट है उसका नाम है लंग 5. सो रिमेंबर, लंग 5 is very important point. Since long time we are using lung 5
फॉर स्किन डिसीजेस, फॉर स्किन डिसीज, मल्टीपल स्किन डिसीज। हम लंग 5 का प्रयोग सदियों से स्किन डिसीज के लिए करते आए हैं। व्हेन वी आर टेकिंग द ब्लड आउट फ्रॉम द लंग 5, it is curing the skin disease. So the question comes, what is the relationship of the taking out blood from the lung 5 and the skin problems? So let's see here. जब लंग 5 से हम ब्लड निकालते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उससे स्किन डिजीज में फायदा मिलता है? So let's see here. So if you look at this image, look at here. So this is the 5 element cycle of the lung. Lung is a metal that we know. Then lung 11, lung 10, lung 9, lung 8, and lung 5. Lung is a metal, lung 8 is a metal. Both are metal. Now, lung 5 will be the sun. तो हम समझ रहे हैं कि लंग एक मेटल है, लंग 8 भी मेटल है, और उसका सन होगा लंग 5, तो लंग 5 सन हो गया। और हम जानते हैं कि कभी भी जब ऊर्जा प्लस प्लस होती है तो हम सन को बोलते हैं कि जाके अपनी माँ की एनर्जी को चूस लो, जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है। So when there is excessive energy in any meridian, we are going to the sun and asking the sun, drink the energy like the sun is drinking mother of milk. So we sedate the lung 5, and for the purpose of sedation, we are doing bloodletting. We are taking the blood out. So as soon as we take the blood out, we see excellent results in the lung disorders like the skin diseases. So lung 5 is the point who found in the elbow. Look at here. अगर हम अभी इस इमेज में देखेंगे हमें पता चलेगा कि lung 5 हमारे elbow में पाया जाता है. So lung 5 is located in the elbow. In this image you can see here. So this is the lung 5. And lung 5 is the, in the 5 element cycle we already have seen lung 5 is the water point. हमने यहाँ देखा lung is the metal. So lung 11, lung 10, lung 9, lung 8, and lung 5. So lung 5 will be the sun point and lung 5 will be the water point. Water point. So lung 5 will be the very good point, sedation point. So if I ask you, tell me the sedation point in the lung meridian, so your answer should be lung 5 sedation. अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लंग मेरिडियन की ऊर्जा को कैसे कम कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि लंग 5 को सेडेट करके कम कर सकते हैं, क्योंकि लंग 5 एक सन पॉइंट है। तो जब भी whenever we want to sedate the energy, we are going to the sun, because sun only is capable to suck the milk of the mother. So this is the lung. Lung is the metal and lung 8 is the metal element and sun will be the lung 5. So when we want to reduce the energy, we will sedate the lung 5. So lung 5 is called sedation point. With the help of lung 5, we can reduce the energy in the lung meridian. तो लंग 5 की मदद से हम लंग की ऊर्जा को कम कर सकते हैं। लेकिन चलो, अब किसी ने कहा कि उसका लंग कमजोर है, someone is having poor lung, someone is having very poor lung, and because of the poor lung having very prone to catch cough and cold during the seasonal changes. जब भी सीजन बदलता है तो कुछ लोगों को लंग कमजोर होने के कारण सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड हो जाता है. So if someone is having poor lung and very sensitive to catch cough and cold, then don't worry. Then we will go to the mother. So this is the lung, and we know lung 11, lung 10, lung 9, lung 8, and lung 5. In this condition, because lung is the metal and lung 8 is also the metal, so we will go to the mother, because the mother is always promoting the sun. So lung 9 will be the mother point. तो जब भी हम लंग की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, हम मदर पॉइंट पर जाएंगे and we will do the tonification of mother, tonification of the mother. So if we want to increase the energy, we will go to the mother, because mother is always helping the sun. तो अगर ऊर्जा को बढ़ाना है तो हम मदर के पास जाएंगे, क्योंकि मदर का काम है ऊर्जा को बढ़ाना. And if we want to sedate the energy, we will go to the sun, because the sun will suck the energy
like kids are sucking the milk from the mother. In this way, this was the second point, lung 5. ये हमारा दूसरा बिंदु था जो लंग मेरिडियन का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. So let's see now. So look at here. So you have to remember these few things only about the lung 5. Now, let's move to the next point, that is lung 6. Lung 6 is the very wonderful point. Lung 6 is G cleft point or the emergency point of the lung meridian. Emergency point or the G cleft point of the lung meridian. लंग 6 हमारे लंग मेरिडियन का एक जी क्लेफ्ट पॉइंट है या मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है. तो जब भी किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी अटैक आता है, व्हेन समवन इज सफरिंग विद द एक्यूट रेस्पिरेटरी अटैक, वी आर यूजिंग लंग 6 because lung 6 is the emergency point or the medical emergency point. So we always stimulate lung 6 during the all medical emergencies. Okay. So let's see the exact location of the lung 6. अगर हम lung 6 की exact location की बात करें, so how to know the exact location of lung 6? So हमें lung 6 की exact location कैसे हम जानेंगे? So for knowing the exact location of the lung 6, let's see now. Look at here. So look at my hand. Okay, so this is my hand. The distance from elbow to the wrist is 12 chun, or we can tell 12 portions. हमारे एल्बो से लेकर हमारी कलाई तक की दूरी 12 चुन की होती है, या हम 12 पोर्शन कह सकते हैं. So from the elbow, we are not going till the half, but just before that, this is the location of lung 6. अगर हम एल्बो से पूरा हाफ ना जाएं, उससे बस थोड़ा सा पहले आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं lung 6. So from the lung 5, because the distance is 12 chun, and we don't have to go to the half, means 6 chun, so we will go just till the 5 chun. So from the lung 5, we are going 5 chun. From the lung 5, we are going 5 chun. This is the medical emergency point of the lung meridian, which we are using for all types of respiratory failure. इसी को हम बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट ऑफ द लंग, जो हम रेस्पिरेटरी फेलर में और सभी प्रकार की लंग्स की इमरजेंसी कंडीशन में प्रयोग करते हैं. So when someone is having any medical emergency of the lung, we are pressing this point vigorously. We are pressing this point vigorously, and we are treating the emergency condition. तो जो लोग ज्यादा इमोशनल गिल्टी फीलिंग में रहते हैं, जो लोग दुखी रहते हैं, जो लोग सैड रहते हैं, उनका ये पार्ट एकदम चमड़े की तरह कड़क हो जाता है. So the person having lots of emotional blockages and stuck emotions, we will find the blockage here. So we will find this part very hard, like a hard leather. So this part should be smooth. So if we do the massage or pressure in this part, we can remove the blockages and energy, like the blockage of the sadness, blockage of the depression and crying, feeling of guilty, all these types of negative emotions we can relieve from the lung 6. तो जब हम lung 6 को दबाते हैं, तो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को हम हटा सकते हैं. So lung 6 is the medical emergency point or the G cleft point of the lung meridian. एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. जो लोग इस बिंदु को रोज दबाते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते या उनकी एजिंग रुक जाती है. क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आता है डीजनरेशन के कारण, and lungs are connected with the degeneration. Lungs are metal or degeneration. So if we press the lung 6 every day, we will never become old, or we can reduce the aging process, because lung 6 is wonderful point for this all. lung 6 एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. हम सबको दबाना चाहिए. अगर आपके हाथ में आपके माता पिता का हाथ आ जाए, तो जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा दबा दो, तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे. और उनके अंदर कुछ इमोशनल होगा, कुछ फीलिंग स्टक इमोशंस होंगे, वो भी
रिलीज हो जाएंगे. So that's why lung 6 is the wonderful point. If you see someone is very depressed and having lots of stuck emotions, then you will find this part like a leather of the animals, very very hard. This part will become too hard. ये पार्ट एकदम हार्ड हो जाएगा. मैंने तो देखा है लोगों का कि पत्थर जैसा कड़क हो जाता है, जो लोग बहुत डिप्रेशन में या सैडनेस में रहते हैं. So the person are living in the sadness or the depression, this part become very very hard. So press the lung 6 every day, or you can do the massage on the lung 6 every day and release all the emotions, negative emotion. And remember the location of this point. This point is 5 portions down from the elbow or lung 5. ये हमारी elbow से 5 चुन नीचे पाया जाता है. हमने आपको बताया था कि लंग 5 से जो ब्लड निकालते हैं वो गॉल ब्लैडर 30 यानी बटक्स में लगाते हैं, पैरों में नहीं लगाते. पैरों में नहीं लगाते because gallbladder 34 is in the leg, because there is a therapy that removing the blood from the lung 5 means elbow point, removing the blood from the lung 5 and injecting the same blood of the same person on the buttock on the location of gallbladder 30. So this is the therapy, skin therapy. Okay, so let's move to the next point. अब हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. अब लंग 6 के बाद ना our next point will be lung 7. Lung 7, very wonderful point. Let's see now. अब हम lung 7 की बात कर रहे हैं. Lung 7 is the great point because first we will see from the wrist it is 1.5 chun. हमारी कलाई से ये है 1.5 chun proximal होता है. From the wrist joint it is 1.5 chun. So we can measure this point with the help of 2 finger because the width of 2 finger is equal to 1.5 chun. So we can measure this point with the help of 2 finger because we have to keep the 2 finger here and the width of 2 finger is equal to 1.5 chun. So we will keep the 2 finger here, 1 finger and the second finger. So this is the 1.5 chun lung 5. Now remember, sorry, lung 7. Why the lung 7 is very good point? Why? So answer is this, because lung 7, number 1, lung 7 is the distal point for neck and the upper back. And this is a very, very famous point. If you want to treat the pain in the occipital part of the head, pain of the neck, or the pain of the upper back, pain of the upper back. अगर आप अपर बैक के पेन को ठीक करना चाहते हैं, गर्दन के दर्द को ठीक करना चाहते हैं और सिर के पीछे के भाग के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, so you have to stimulate the lung 7 because lung 7 is the distal point of this whole part. हमारे यहाँ तक के पूरे पार्ट का ये lung 7 एक distal point है. This is the distal point. Now this is the thing number 1. Number 2, lung 7 point found here. Lung 7 point कहाँ होता है? Let's see here. So this is the lung 9. Lung 9 is here. हमारा lung 9 यहाँ पर होता है. This is the location of lung 9. From here, this point is 1.5 chun. But remember, this point is not like this, but this point is here on the side. ये point हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होता बल्कि ऐसा होता है, यानी मेरिडियन ऐसे घूमता है, थोड़ा रास्ते से भटक जाता है और लंग 7 हमारे यिन यांग बॉर्डर पर होता है. तो जब भी हम लंग 7 की बात करते हैं, लंग 7 पॉइंट इज नॉट फाउंड ऑन द ट्रैक, इट इज ऑफ द ट्रैक, it is off the track. So if you see my hand, look at here. So this is the lung 9. Now if you are coming here, this is not the lung 7. ये lung 7 नहीं है. Lung 7 point is off the track means here. This. So we are telling this ditch, we can see this ditch. इस ditch का नाम है snuff box. So this is called snuff box. From this snuff box, if we come 1.5 chun, then we will find the lung 7. Lung 7 on the side, not here.
तो अगर कोई पूछे कि लंग 9 से लेके लंग 7 की दूरी कितनी होती है, तो हम कहेंगे 1.5 चुन। And lung 7 is the distal point for head region on the back side, neck region, and the upper back. So this is a very important point. And the most important point is this: lung 7 is the Leo connecting point of lung. Leo connecting point of lung. और जब हमारे शरीर में मुख्य रूप से विंड कोल्ड का आक्रमण होता है, जब हमारे शरीर में ठंडी घुसती है, तो ठंडी के पार्टिकल्स इन्हीं लियो बेसल में फंस जाते हैं. So when the cold want to enter in your body, so cold are hanging in this Leo vessel. What is Leo vessel? The meaning of Leo vessel: from the Leo point, there is a one network of, like a net spider, like the spider is making the what spider is making, like he is making whole network of. In the same way, Leo vessel making network all around. Yeah. So we can see. So lung 7 is making the network below the skin. So when cold want to enter in your body, it is hanging in the Leo vessels. It is hanging in the Leo vessel. तो जब भी हमारे शरीर में ठंडी घुसना चाहती है, तो ठंडी घुसने की कोशिश करती है, तो पहले वो जाले में फंस जाती है. जो हमारे स्किन पर एक जाला है, वो जाला किसने बनाया? लंग 7 ने बनाया. और हम जैसे लंग 7 को सेडेट करते हैं, ठंडी बाहर निकल जाती है. सो लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट इफ यू वांट टू एक्सपेल द any pathogenic attack, because first pathogenic attack is attacking on your skin. So the Leo connecting point who is expelling the pathogenic cold, pathogenic wind out. यानी कुल मिला के लियो कनेक्टिंग पॉइंट का काम होता है हमारे शरीर को सुरक्षा देना, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना. जब भी हमारे शरीर पर कोई आक्रमण होता है, तो लियो बेसल बड़ी ऊर्जा को पार्टनर चैनल में भेज देते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर ऊर्जा को पार्टनर चैनल से प्राप्त कर लेते हैं. सो लंग 7 इज द लियो पॉइंट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द after the lung 7, our next point will be lung 9. Let's see and move to the next point, that is lung 9. Okay, so this is the lung 9 point. 1 minute. So look at this image. इस इमेज में देखिए, lung 9 point is on the wrist crease. Lung 9 point found on the wrist crease. Now, again you can see the image of the lung 9 here. So lung 9 point found on the wrist crease, and this is called pulse point, the point of pulse, because when we want to check the pulse, we are keeping our one finger here, second finger here, and third finger here. So the lung 9 is called the point of pulse. lung 9 को हम पल्स का पॉइंट भी कहते हैं, और पल्स को ही दूसरी भाषा में हम कहते हैं blood vessels. So lung 9 is the point of blood vessels, or lung 9 is called the influential point of the blood vessels. Lung 9 is the influential point of blood vessels. So whenever there is any problem in the body which is connected with the blood vessels, so do not forget the lung 9. Suppose there is a blockage in the capillaries, blockage in the arteries or veins, any problem anywhere in the body, like varicose veins, like blockage in the heart, like blockage in the coronary arteries, any types of blockage in the blood vessels. So we cannot forget lung 9, because lung 9 is the point of blood vessels. lung 9 हमारी blood vessels का point है. इसलिए जब भी हमारे शरीर में कहीं भी blood vessels के अंदर कोई भी blockage होता है, जैसे कि और blood vessels की कोई भी problem होती है, तो हम lung 9 को जरूर लगाते हैं. जैसे वेरिकोज वेन हो जाना, या हार्ट में ब्लॉकेज का हो जाना. अभी कोरोना के समय जब लोगों के आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बन रहे थे, तो उस कोविड के प्रोटोकॉल में एक पॉइंट लंग 9 भी था, ताकि कैपिलरीज के अंदर बनने वाले ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सके. सो लंग 9 इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द कोविड पेशेंट, बिकॉज इन द कोविड पेशेंट ऑल्सो देयर इज ए
blockage inside the blood vessels. So lung 9 is the wonderful point for blood vessels, or it is pulse point. Now lung 9 हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि lung 9 is also the mother point. Look at in this image. Lung 9 is also the mother point. So it is mother point. So mother tonification point. If we want to increase the energy in the lung, so we will stimulate the lung 9. अब मानिए कि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड होता है, उस व्यक्ति का लंग कमजोर है, तो मौसम बदलते ही उसको लंग की बीमारियां हो जाती हैं, तो हम उसके लंग की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएंगे? हम लंग 9 को टोनिफाई करेंगे. So if someone is very common, very prone to catch cough and cold because of the poor lung, because of the poor lung condition, so we will stimulate the lung 9, because lung 9 is the mother point, and with the help of stimulation of the lung 9, we can fill the lots of energy in the lung meridian, and the person will feel very wonderful in the lung with the time, because lung 9 is the mother tonification. So whatever the problem, because of the blood vessels, suppose there is some blockage in the blood vessels inside the brain, even after that we will use the lung 9. अगर किसी के दिमाग की कोई कैपिलरीज में भी आप कुछ गड़बड़ है, कुछ अटका हुआ है, ब्लड क्लॉट बना हुआ है, तो हमारे प्रोटोकॉल में हम लंग 9 को जरूर शामिल करेंगे. So lung 9 is the influential point as well as the mother tonification point. So this was the completion of lung meridian. Let's move to the large intestine. So in the large intestine, there are many important points. So first point will be Li4. पहला बिंदु हमारा Li4 होगा. So look at the image of the Li4. We know here we are having muscle. Here we are having muscle. The name of this muscle is interosseous muscle. Interosseous muscle. And the tip of the interosseous muscle, is Li4, large intestine 4. And remember one formula here, whether you talk about the Li4, triple warmer 4, Si4, these all 4 and 4 and 4 are source point. These are the source point or ion source point. So if we talk about the Li4, it is the source point, triple warmer 4 also the source point, and the small intestine 4 also the source point. And what is the function of the source point? Because Li meridian is the male meridian that we know. Li meridian is the male meridian. Li meridian हमारा young meridian है, male meridian है, और जितने भी source point होते हैं, वो अपनी फीमेल की हेल्प करते हैं. All the source point are helping the female, means all the young source point always ready to help the female, means yin. So their main purpose just protecting the female and helping the female. Like if you ask me what is the function of Li4, I will tell, okay, they are helping lung. Okay, what is the function of triple warmer 4? Okay, they are helping pericardium. What is the function of small intestine 4? Okay, they are helping heart. What is the function of gallbladder source point? They are helping liver. What is the function of urinary bladder source point? They are helping kidney. What is the function of stomach source point of the stomach? Helping spleen. So all the source point are helping the yin organ. Clear? Now, or mainly 1 minute only. Give me 1 minute. Okay. And the main function of the source point, if we talk about the yang, to expel pathogen. चलिए अब हम देखते हैं Li4.
Li4 सोर्स पॉइंट है, तो ये किसको बाहर फेंकेगा? क्योंकि हमने बात की कि सोर्स पॉइंट का काम है, सोर्स पॉइंट का काम है पैथोजन को बाहर फेंकना. So we know if we are stimulating the Li4, Li4 is removing all the blockages from the top to bottom from the body. जब हमारे शरीर में ब्लॉकेज होता है तभी हमें दर्द होता है, और अगर हमारे शरीर में कोई ब्लॉकेज ना हो तो हमें दर्द भी नहीं होगा. If the blockage is there, then we will feel the pain. If blockage is not there and the energy flowing smoothly, then we are not having any types of pain anywhere in the body. So Li4 is having great capacity to flow the energy from top to bottom. That's why Li4 is the great painkiller point. Li4 is called most effective पेन किलर पॉइंट. Li4 को हम बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर पॉइंट. दिस इज द Li4. नाउ Li4 भी नेवर स्टिमुलेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. हम Li4 को कभी भी प्रेगनेंसी में स्टिमुलेट नहीं करते, बिकॉज इट we never stimulate this point during the pregnancy, because Li4 is too vigorous stimulator. It may create lots of stimulation in the uterus and may cause abortion. So we never stimulate Li4 in the pregnancy. चाइना में जब वो मुहिम चली थी कि बच्चे नहीं होना चाहिए एक से ज्यादा, तो लोगों ने Li4 को स्टिमुलेट कर करके एबॉर्शन करवाए थे. So Li4 has been used for like big population in the China, and the Li4 cause of abortion for many females. When the Chinese has made this rule, there should not be more than one kid. Even they have done this Li4 stimulation for many females, even they were not having a single kid, because for the population control in the China. So Li4 is a very important point and it may cause abortion if you stimulate this point very vigorously. अगर आपने इस point को बहुत तेज दबाया तो ये abortion करा सकता है. So we never stimulate Li4 for the pregnant lady, but we always stimulate Li4 for any types of pain in the body. तो हम कभी भी इस point को नहीं दबाते प्रेगनेंसी में, लेकिन इसे हम हमेशा दबाते हैं दर्द में, क्योंकि ये एक एनाल्जेसिक पॉइंट है. So let's see. This was the, so what is the main point regarding the Li4? Number one, this point found on the top of the interosseous muscle. Number two, it is a source point of the large intestine. Number three, it is a painkiller point or the great painkiller point or the most effective painkiller point in the body. Number four, we never stimulate this point for pregnant lady. So next point will be Li11. अब हम Li11 की बात करते हैं. Li11 point found in the elbow, ये हमारे elbow में पाया जाता है. So Li11 point found in the elbow, and this is the very excellent point of the elbow. Why? Let's see why the Li11 point is great point. Let's see this image. So if you look at the Li meridian, अगर आप Li meridian को देखें, so this is the Li1, Li2, Li3, Li5 and Li11. Li is the metal. Li एक metal है और Li1 भी एक metal है. Then who is the mother? Mother will be earth. So Li11 is the mother point or the earth point. So Li11 is the tonification point. So we can increase the strengthening of the Li meridian if we stimulate the Li11. Li11 हमारे large intestine meridian का mother tonification point है. That's why it's a very wonderful point. Let's see the location of Li11 here. Look at my elbow. अगर आप elbow को देखेंगे तो ये elbow की outer crease है. This is the location of Li11. If I press this point, then I am doing very great stimulation of the large intestine. What is the importance of this point? The most important point, this is the number one, this is the immunity point. Immunity, it is increasing our immunity. Number two, it is a very excellent point if you want to expel the heat out from the body. अगर आप शरीर से गर्मी को निकालना चाहते हैं तो ये बहुत ही शानदार बिंदु है. You can expel the unwanted heat from the body via the Li11. If someone is feeling lots of heat anywhere in the body,
we can exhale with the help of this point, and we are also stimulating this point for high blood pressure. If you press this point, and you will see blood pressure will reduce very shortly. अगर आप इस पॉइंट को दबाते हैं तो बीपी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे सिर की गर्मी को निकाल देता है, हमारी आंतों की गर्मी को निकाल देता है, और हमारे बॉडी की गर्मी को निकाल देता है, और गर्मी निकलते ही बीपी कम हो जाता है। हम प्रैक्टिकली इस पॉइंट का प्रयोग बहुत करते हैं गर्मी को निकालने के लिए, बीपी के लिए। एंड Li11 इज द इंपेरिकल पॉइंट। इंपेरिकल पॉइंट का मतलब है कि सदियों से यूज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन पता नहीं है क्यों यूज कर रहे हैं। Li11 इज द इंपेरिकल पॉइंट फॉर गिडीनेस, चक्कर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। So this is the empirical point for the giddiness. If someone is telling you, I am feeling giddy, I am feeling dizzy, do something, stimulate Li11 point. Li11 is wonderful point. Li11 is a very great point for the high blood pressure. I have seen the very good result within 2 to 3 minutes just by acupressure. आप acupressure करके बीपी कम कर सकते हो। Li11 point found on the outer elbow crease, हमारी elbow crease पर पाया जाता है, और इट्स ए मदर टोनिफिकेशन पॉइंट। ये मदर पॉइंट है, ये मेटल की मदर है, ये मेटल की मदर है। अगर आप देखोगे Li4, लुक एट दिस में Li11 हमारी कलाई से कितनी दूरी पर है? सो वी कैन सी द टोटल लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज 12 चुन। द टोटल लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज 12 चुन। या सो दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। यस, यू आर राइट, दिस इज द होम्योस्टेटिक पॉइंट। या ये हमारा होम्योस्टेटिक पॉइंट, यू आर राइट। So Li11 is the homeostatic point. So this is the Li11 is the homeostatic point. And what is the meaning of homeostatic point? The point who bring equilibrium in the body, जो हमारे शरीर में साम्य अवस्था लेकर आता है, हर चीज को ठीक करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं होम्योस्टेटिक पॉइंट। लेट्स सी दिस, 1 minute. So look at this. I will show you one thing, so you will understand, because this I have already, yeah, look at this. I have sent in the WhatsApp. See this. So look at here. In the Li11 is the immunity point. Li11 governing vessel 4, governing vessel 13 and 14. So Li11 is the immunity point, as well as Li11 is the homeostatic point. लुक एट हियर। तो Li11 हमारा होम्योस्टेटिक पॉइंट है, जो हमारे शरीर को सामान्य अवस्था में लेकर आता है, हमारे शरीर की हर चीज को बैलेंस रखता है, चाहे हमारे शरीर का बीपी हो, शुगर हो, हमारे शरीर की हर चीज को बैलेंस रखने का काम करता है Li11, इसलिए हम इसे होम्योस्टेटिक पॉइंट कहते हैं, और साथ ही साथ यह इम्यूनिटी पॉइंट भी है। सो Li11 इज द होम्योस्टेटिक पॉइंट एज वेल एज द इम्यूनिटी पॉइंट। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, तो दोनों है। तो कभी पूछा जाए आपसे कि इम्यूनिटी पॉइंट कौन से हैं, तो Li11 भी है, लेकिन अगर गवर्निंग वेसल दिया हो, गवर्निंग वेसल 14 दिया हो, तो पहले आपको गवर्निंग वेसल 14 को चुनना होगा। इफ समवन इज टेलिंग यू, टेल मी व्हिच इज द इम्यूनिटी पॉइंट, यस डेफिनेटली Li11। ओके, समवन इज टेलिंग, ओके टेल मी यू Li11 is immunity point or governing vessel 14, then you have to tell, okay, governing vessel 14, because governing vessel 14 is having more power. Clear? Now, so move ahead now. So Li11 point is the very good point, and we are using this point very regularly. And why this point is wonderful? Because it is homeostatic point as well as the immunity point. अब अगर आप पूछें कि बताओ कि होम्योस्टेटिक इफेक्ट ज्यादा है इसमें या इम्यूनिटी इफेक्ट ज्यादा है, तो हम कहेंगे ये इसके अंदर होम्योस्टेटिक वाला इफेक्ट ज्यादा है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज Li15। Li15 पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, ये हमारे कंधे पर पाया जाता है। वी कैन सी दिस इज द शोल्डर जॉइंट एंड द एंटीरियर पॉइंट इज Li15। दिस इज द एंटीरियर पॉइंट Li15। Li15 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द शोल्डर पेन, हमारे कंधे दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। अब जब हम TCM की बात करते हैं तो हम केवल इतना ही पढ़ते हैं कि Li15 इज गुड फॉर
shoulder pain. In the TCM, just we are studying this much, that this is a good point for shoulder pain. So you can feel it here. If you keep your index finger here, do like this, you can feel the depression here. आप यहाँ पर हल्का सा depression feel करेंगे. This is the LI15. You will feel the depression here, a very slightly depression here. And if we do the blood letting from this point, then what will happen? Do you know? अगर इस point से हम blood निकाल दें तो क्या होगा? If we do the blood letting from this point, we take out few drops of blood from this point, then what is going to happen? Do you know? Anyone know? Then it's a very good point for stammering. You know stammering? अगर कोई stammering करता है किसी, so this is a very good point for the speech. If we take out the few drops of blood from the LI15, मतलब जब कोई व्यक्ति हकलाता है, हकला के बोलता है, तो हम LI15 को दबाते हैं, LI15 को हम ब्लड लीड करते हैं, तो व्यक्ति की आवाज सुधर जाती है. लेकिन TCM में इस थॉट की जरूरत नहीं है. This is the thought of master tongue. This is the thought of master tongue, that LI15 is a very wonderful point for speech. But as per the TCM, just remember, sir, what does it do? I did not understand, Dr. Rajiv Gupta ji, what you asking. So I am telling the LI15 is the good point for stammering. If someone is not able to speak properly, with the help of LI15, we can improve the speech, or even be, oh, okay, you are asking dose. If we want to blood late, we can take out few drops of blood, like few drops, because 8 to 10 drops, or 20 drops, or even 20 ml, no problem. No need to take out too much blood. Okay, so because we are just stimulating the point, LI15 is a very good point for shoulder pain as per the TCM. हमारे TCM के अनुसार. Okay, how many days? That depend on the condition. Like we have to do at least 12 days in a month. कम से कम 12 दिन. उनके माता पिता को बता दो कि वो दबाते रहेंगे बच्चे का, या बच्चा बड़ा हो तो उसको समझा दो. He will stimulate. Okay, so this is now the very important thing. So okay, wonderful thought of the Rajiv Gupta ji. Excellent. Why? Because LI15 is then coming in the throat, then going around the mouth, so it might be having some branches. Definitely one meridian is going like this, one meridian is going like this, so it is also encircling the mouth. Wonderful, your thought is wonderful. So I will show you one image. मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा कि LI15 हमारे माउथ को कैसे इंसर्कल करके ऊपर जाता है और क्यों ये स्पीच को सुधारता है. Excellent. So let's see now. 1 minute. Okay, I will take some time for showing this image. Yeah. So LI15 point is the very good point for the shoulder pain as per the TCM, but it is a very good point for the speech as per the master tongue. Let's see now. Yeah, look at this image. अगर आप इस इमेज को देखते हैं, so look at this image, how this meridian is encircling the mouth. This is the LI meridian, so that's why it is control, it is working for the speech. Okay, so let's move ahead. अब हम बात करते हैं कि LI15 क्या करता है. So the main function of the LI15, what is the main function of the LI15? Look at here, because LI15 point is here. So if we stimulate the LI15, it will help in this movement. It will help in this movement. And what is the name of this movement? This movement is called flexion of arm. This movement is called flexion of arm. इसे हम कह सकते हैं flexion of shoulder joint. Flexion of shoulder joint. So if we stimulate the LI15, we can improve the flexion of shoulder joint. In the same way, if we want to improve this movement, अगर हम इस movement को improve करना चाहते हैं, so we will stimulate this point. This is a triple warmer 14 on the back side. So if we stimulate the triple warmer 14, then we can improve the extension. तो हम extension को improve कर सकते हैं. Okay, so LI15 is for the flexion. Let's move to the next point, that is LI20. So look at in this image.
So this is the Li20 point. Li meridian having total 20 points, and this will be the last point of large intestine meridian. हमारे large intestine meridian का यह आखिरी बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं Li20. This is the nose, and around the nose, this is the groove. This is called nasolabial groove. And this is the last point in the nasolabial groove, that is called Li20. Li20 will be the last point. Okay, now Li20 हमारे nasolabial groove के बगल में जाकर खत्म होता है और हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का आखिरी बिंदु है. अगर हम बात करें कि एलाई मेरिडियन जो इधर से आता है, द एलाई मेरिडियन कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इट इज एंडिंग अपोजिट साइड, एंड द एलाई मेरिडियन हु इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, हु इज ending to the opposite side. So in the human body we have only one meridian, and that is Li meridian, who is ending opposite side. हमारे शरीर में इतने सारे मेरिडियन हैं, लेकिन उन सारे मेरिडियन में केवल एक ही ऐसा मेरिडियन है जो अपोजिट साइड में खत्म होता है, और जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन. बाकी जितने भी मेरिडियन हैं, कितने भी छोटे हों, कितने भी लंबे हों, लेकिन राइट में होंगे तो राइट में रहेंगे और लेफ्ट में होंगे तो लेफ्ट में रहेंगे. बट द एलाई मेरिडियन is the meridian, only the meridian in the human body who is ending to opposite side. And the last point will be Li20, and this groove is called naso, because this is the nasolabial groove. This is called nasolabial groove. So this is the last point. वैसे आपको एक चीज बता दूं कि वैसे हमारे काम की चीज नहीं है, फिर भी बता देता हूं. Not useful, but even after that I'm telling, Li20 is the wonderful point for pituitary gland. Pituitary. The pituitary gland doing lots of secretion. Like pituitary gland is the master gland of the body. It is making many hormones. Okay, it is making growth hormone, thyroid stimulating hormone, gonadotropic hormone, prolactin hormone, too many hormones. So this is the master gland, and this is the Li20 is the point of this pituitary gland. तो आप समझिए कि Li20 कोई ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है. Li20 पॉइंट डेफिनेटली गुड फॉर साइनोसाइटिस, रनिंग नोज, ब्लॉक नोज, स्टफ नोज. इट्स ए वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस. ये हमारी सर्दी खांसी के लिए, रनिंग नोज के लिए अच्छा है, बट Li20 इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड. इट्स ए वेरी गुड पॉइंट फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो Li20 इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी अस्थमा पॉइंट. इसे हम, वैसे तो हमारा डिंगचुआन होता है, द मेन पॉइंट इज द डिंगचुआन, लेकिन Li20 को भी हम एंटी हिस्टामिनिक पॉइंट कहते हैं. दिस इज ऑल्सो एंटी हिस्टामिनिक. हाउ टू निडल? Okay, you can needle obliquely like this. Even we can place this point in the Marma Shastra. In the Marma therapy, we are doing the pressure like this, clockwise and anti-clockwise. In the Marma therapy, we are doing the stimulation of the Li20 just by doing the clockwise and the anti-clockwise movement, and the people are getting very wonderful results just by doing the acupressure. And if we want to put the needle, then put the needle obliquely here. Other point is we are going to discuss, that is EX17. This is in our coming soon. If possible, then we'll discuss today. If we don't have time, then it will come on the next class. Okay, so now, so this was the Li20. Now look at image once again. एक बार इसकी image फिर से देखिए. So Li20 is the very good point, and it's a very good point for the अस्थमा. लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछे कि अस्थमा का सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए डिंग चुआन और द EX17. वो तो हमारा, वो बदलेगा नहीं, कहीं गलती से आप उसको मत भूल जाना, वो तो हमारा सबसे मुख्य बिंदु है. Now this is also antihistaminic point. This is also antihistaminic point, Li20. Okay, so let's move to the next, that is heart meridian. We are having mainly 3 points in the heart meridian. They are the very important point, 3, 5 and 7. Let's see.
So let's start the discussion with the heart 3. Okay. So in the heart meridian, we are having only 9 point, heart 1, 2, heart 9, only 9 point. And this is the elbow region. In the elbow, we are having heart 3, which is the very excellent point. Why? So the reason is this. Listen. ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हार्ट 3 एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है? What is the reason? So the reason is this. Heart 3 is on the elbow. So it is the water point. So it is cooling down the heart. So if someone is having high blood pressure, just do the acupressure on the heart 3, it will cool down the heart, will reduce the blood pressure. Okay, so with the one finger you can hold the LI11, with another finger you can hold the heart 3 point. Press, release, press, release, press, release. Just do for 3 minutes and check the BP. You will see the wonderful changes. The BP will get reduced within 2 to 3 minutes. Just why? LI11 and the heart 3 only acupressure. आप इस पर acupressure करते हो, BP कम हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, क्योंकि LI11 गर्मी को निकाल देगा और हार्ट 3 हार्ट को कूल कर देगा. It's a water point. So heart 3 is the water point, and definitely your thought also right. But elbow, if we are hanging our hand down. So elbow is coming near about the level of navel region, navel. तो elbow हमारे नाभि के लेवल पर आती है. ओके, नाभि के लेवल पर आती है. ओके, अगर आप बोलोगे कि हार्ट के लेवल पर, तो हार्ट के लेवल पर ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट. This part will come at the level of heart, the middle part. Okay, but the elbow is coming near about the, not exactly at the level of navel, but little up from the okay. So now heart 3 is the water point. So it is cooling down the heart. ये पानी water point है, तो heart को cool down करता है. So we are using heart 3 for high blood pressure. Now, why we should know about the heart 3? Number one, heart 3 is the water point. And number 2, heart 3 is located in the inner elbow crease. Heart 3 कहाँ होता है? Inner elbow crease पर होता है, outer elbow crease पर नहीं होता. It is the inner elbow crease. Okay, now next thing, if someone asks you, okay, tell me the meridian who is passing from the inner crease to the wrist. So this is the heart meridian. Okay, तो कोई पूछेगा बताओ तो कि एल्बो की इनर क्रीज से हमारी कलाई तक कौन सा मेरिडियन जाता है? हार्ट मेरिडियन जाता है. ठीक है, इतना बात है आपको ध्यान. नाउ समवन इज आस्किंग यू, टेल मी द मेरिडियन हु इज कमिंग फ्रॉम द आउटर एल्बो क्रीज. That is large intestine meridian. That is the large intestine meridian. So remember this thing mainly. Okay, so this was the few things about the LI. Okay, so we are coming back to the heart 3. So we were discussing the heart 3. So heart 3 is the very good point in the inner elbow crease. हार्ट 3 हमारी एल्बो की इनर क्रीज में पाए जाने वाला एक बहुत ही शानदार बिंदु है. हमने कितने लोगों का बीपी कम किया इससे. अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हार्ट 5 और हार्ट 7. नाउ लुक एट दिस इमेज. हमारी कलाई में जो बिंदु होता है इसका नाम है हार्ट 7. दिस पॉइंट इज कॉल्ड हार्ट 7. नाउ वी आर गोइंग now from the heart 7. Suppose this is the heart 7. Now from the heart 7, if we go half tune up, and half tune up. From the heart 7, if we are going half tune up, half tune up. So suppose this is the heart 7. If we are going half tune up, then heart 6. If we are going half tune up, then heart 5. If we are going half tune up, then heart 4. So there are 4 points in the line. अगर हम हार्ट 7 से
आधा आधा चुन ऊपर जाते हैं तो 4 पॉइंट हमें एक लाइन में मिलते हैं. So we are getting 4 point in the line like this is the. So we are getting 4 point in the line. Look at in this image. So this is the location of heart 7, then a half tune away, that is a heart 6, then a half tune away, that is a heart 5, then a half tune away, that is a heart 4. Okay, so heart 7 point on the wrist. Okay, let's talk about the heart 7. हार्ट 7 में ऐसी क्या खास बात है? हार्ट 7 का एक दूसरा नाम है शैन मैन. द मीनिंग ऑफ शैन मैन, हु ब्रिंग पीस. द मीनिंग ऑफ शैन मैन, द डोर ऑफ द गॉड. द डोर ऑफ द गॉड. तो भगवान के घर का दरवाजा है हार्ट 7. मन को शांत प्रशांत करने वाला है हार्ट 7. तो जब आपके मन में अशांति हो जाए, आपको नींद ना आए, कुछ ना, हार्ट 7 को सेडेट कर देना. जब आपको लगे ऐसा करने का मन हो, ओम शांति शांति शांति, हार्ट 7, पेरिकार्डियम 7, sedate. They will bring peace in your heart, peace in your mind. If someone is having epileptic fit, sedate the energy of the brain, sedate the heart 7 and pericardium 7. If someone is having mouth ulcer or the tongue, especially tongue ulcer, so this is the excessive heat in the heart, sedate the heart 7, heart 8, heart 9, pericardium 7, pericardium 8, pericardium 9. So heart 7 is a special point which is connected with the heart. Now what is the specialties of the heart 7? Let's see. तो क्या हम सिर्फ हार्ट 7 को सेडेट करते हैं? जी नहीं, हम हार्ट 7 को टर्न भी कर सकते हैं. अगर हम हार्ट 7 को टर्न करेंगे तो हार्ट की ऊर्जा बढ़ जाएगी. जैसे अगर किसी व्यक्ति का हार्ट कमजोर है तो आप हार्ट 7 को टर्न भी कर सकते हो. Why we can turn the point? Let's see now. So when we talk about the heart meridian, so this is the heart and we have heart 9, heart 8, heart 7, heart 4 and heart 3. So heart is the fire and heart 9 is the wood point, heart 8 is the fire point, heart 7 is the earth point, heart 4 is the metal point and heart 3 will be the water point. तो हार्ट तो फायर है और ये हमारा हार्ट 8 भी फायर है. इसका सन होगा हार्ट 7 एंड सन ऑलवेज डू सेडेशन. सन का काम है माँ का दूध पीना. सन का काम है माँ की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेना. तो जब भी हम हार्ट 7 को सेडेट करते हैं, सो when we are sedating the heart 7, it is reducing unwanted energy from the heart. So it's a very good point who bring the peace in mind and soul. तो वो एक बहुत ही शानदार बिंदु है जो हमारे दिल में और मन में शांति लेके आता है. लेकिन हम हार्ट 7 की एक दूसरी बात भी है कि हमारी कलाई पर जितने भी बिंदु पाए जाते हैं, हमारी कलाई पर जो बिंदु पाए जाते हैं, इन्हें हम सोर्स पॉइंट कहते हैं. सो दे आर ऑल्सो द सोर्स पॉइंट. लेट्स सी दिस इमेज. लेट्स सी दिस इमेज. तो चूंकि ये सोर्स पॉइंट होते हैं, इसलिए हमने हार्ट 7 को अगर हमने हार्ट 7 को टॉनिफाई कर दिया, सो दिस इज द हार्ट 7, इट इज द सोर्स पॉइंट ऑफ द हार्ट. ये हमारे हार्ट का सोर्स पॉइंट है. दिस इज द पेरिकार्डियम 7, इट इज द सोर्स पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम एंड दिस इज द लंग 9. लंग 9 is the source point of the lung. So these all the 3 points are the source point. So चूंकि तीनों पॉइंट सोर्स पॉइंट हैं, तो जब हम हार्ट 7 को टॉनिफाई करते हैं, यह पूरे हार्ट की ताकत को इंप्रूव कर देता है. So because this is receiving the energy from the kidney, because source points are connected with the kidney. This is receiving the energy from the partner, because source points are also connected with the partner. Okay, so this is the location of heart 7. यहाँ पर एक tendon है. This is the tendon. We can see the tendon here. So the tendon, what is the name of this tendon? इस tendon का नाम क्या है? इस tendon को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये हमारी अल्ला बोन है. The name of this bone is Allah. The name of this bone is radius. So what is the name of this tendon? The tendon name is ulnaris. So the full name, because this is the carpal bone, so carpi, and this is the ulna bone, ulnaris.
So carpi ulnaris, and with the help of this tendon, we are doing this movement. So this is called flexion. So the name of this tendon is flexure carpi ulnaris, flexure carpi ulnaris. तो यहाँ पर जो टेंडन होता है वो हमारी उंगलियों को फ्लेक्शन करता है, तो इसलिए हम कहते हैं फ्लेक्शर। और कलाई की हड्डियों को कार्पल बोन बोलते हैं, तो कार्पाई, और इस हड्डी का नाम है अल्ना, सो अल्नेरिस। So the name of this tendon who is attaching with the ulna bone, carpal bone, and helping for flexion. So the name of this tendon is flexure carpi ulnaris. Now, अगर मैं पूछूं कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के बगल में कौन सा बिंदु है, तो आप बोलोगे हार्ट 7. So the name of this point is heart 7. Now, remember, the thumb side is called radial side and the small finger side is called ulnar side. जब भी हम बोलेंगे thumb side मतलब radial side और small finger side मतलब ulnar, हमारी ulnar side. अब मैं आपसे पूछूं इस टेंडन के रेडियल साइड में कौन सा पॉइंट होता है, तो आपको बोलना होगा हार्ट 7. So what is the name of this point on the radial side of this tendon? So the name of this point is heart 7. अगर मैं आपसे पूछूं, tell me what is the name of radial point, what is the name of the point on the radial side of the flexor carpi ulnaris? Flexor carpi ulnaris. The point on the radial side of flexor carpi ulnaris. So our answer will be heart 7. So remember this. तो हमने जब आपको इसमें हम कई बार बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रेडियल साइड सुनते ही हम पूरे अंगूठे की तरफ चले जाते हैं और लंग 9 लगा देते हैं. So remember this thing very, like this is the tendon. On the radial side of this tendon is the heart 7. Heart 7 को हम शांति बिंदु कहते हैं. कोई बोले कि बहुत थॉट चल रहे हैं दिमाग में, नींद नहीं आ रही है, यार ऑफिस का काम बहुत सारा पेंडिंग है, स्ट्रेस है, यार एग्जाम आ गया, बहुत टेंशन है, क्या करें? Sedate the heart 7. Calm down the heart 7. Bring the peace in your heart. Because if you are too much stressful, you will having tremors. You may get tremors. You may get vibration. You may get vibration. So sedate the heart 7. If you sedate the heart 7, then you will feel lots of peace in your mind and heart. But if you are feeling comfortable, then do not sedate. अगर आप पहले से ही कंफर्टेबल है तो कुछ सेडेट बेडेट मत करो, लेकिन आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आपका दिल कांप रहा है और डरे हुए हैं, तो हार्ट 7 को थोड़ा सा सेडेट कर लो. ओके, हार्ट 7, you can sedate the heart 7. How can we sedate the heart 7? Heart 7 is the earth point. Earth point. So if you want to do the sedation, put the black color or the green color to sedate it. Put the black color or the green color. Because who will control the earth? Either the grandmother or the grandson. So put the color of the grandmother, that is green, or put the color of the grandson, that is black. But do not sedate too much. Otherwise, you will not be having any tension, then you will not study. Okay. So little tension is also good. So let's move ahead and look at here. अब देखते हैं. So heart 7 point is the very good point. चलिए मैं आपको फिर से एक मैसेज दिखाता हूं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक मैसेज दिखाया था. Look at the message once again here. Sedative point. Look at here. Sedative point. Heart 7 is the sedative point. Okay. Heart 7 is the sedative point. DU20 also sedative point. EX6 is sedative point and UB62 sedative point. But right now our focus is heart 7. ये एक sedative point है और sedative point का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमारी बॉडी में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है. To control the hyperactivity, we are using the sedative point. Now, let's move ahead and look at the another point, that is heart 5. Now, from the heart 7, if we go half tune, then there's the heart 6. Then again half tune, there's the heart 5. So heart 5 is 1 tune proximal. 1 tune proximal. So from the heart 7, if you go 1 tune proximal,
then you are going to get heart 5, and heart 5 is the very wonderful point because heart 5 is the Leo connecting point. Heart 5 is the Leo connecting point. So when we are stimulating the heart 5, it's a wonderful point for your speech because from the heart 5 there is a branch, the branch of energy is coming and ending in the root of tongue. So from the heart 5 there is a branch of the energy is coming and ending in the root of tongue. So if you want to speak a lot, if you wanted too much energy in your heart, then tonify the heart 5. अगर आपने हार्ट 5 को टोनिफाई कर दिया तो हार्ट 5 को टोनिफाई करने से आपकी जीभ की ताकत बढ़ जाएगी और आप बहुत ज्यादा बोलेंगे। अगर आपका मन है चुप रहने का और बिल्कुल आप बोलने का मन नहीं कर रहा है जबकि बोलना जरूरी है तो हार्ट 5 को टोनिफाई कर दो। बट इफ समवन इज स्पीकिंग अनवांटेड unnecessary then sedate the heart 5. अगर कोई बकवास कर रहा है बक 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 कर रहा है तो हार्ट 5 को sedate कर दो। So heart 5 is very good. It is a very good point for the aphasia. Aphasia means speech disorder because of the paralytic attack. Someone is getting the paralytic attack and losing the speech. So tonify the heart 5, and heart 5 is the wonderful point for improving the speech. So remember the heart 5. Heart 5 is the very good point for aphasia. Aphasia. And it's a Leo connecting point. तो हार्ट 5 हमारे एफेजिया के लिए यानी स्पीच के लिए बहुत शानदार बिंदु है और ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। और अगर किसी के शरीर में हार्ट की ऊर्जा की बहुत कमी है तब भी हम हार्ट 5 को स्टिमुलेट करके उसकी ऊर्जा को इंप्रूव कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग अबाउट द हार्ट 5. नंबर 1, हार्ट 5 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट. नंबर 2, हार्ट 5 इज वंचुल. Heart 5 is ventral, away from the heart 7, or proximal. Proximal means toward the body, that is called proximal. And distal means away from the body, that is a distal. So from the wrist we are going ventral, proximal, that is heart 5. तो हमें हार्ट 5 के बारे में समझना होगा कि हार्ट 5 एक लियो पॉइंट है और हार्ट 7 एक सोर्स पॉइंट है. So this is the difference. Okay, so heart 5 will be the Leo point because the branch from here meeting with the partner channel, the branch from here ending on the root of the tongue, and regarding the heart 7, the branch from here meeting to the kidney, that's why we are telling it source point, your own source point, and branch from here meeting to the partner channel. So heart 7 is very wonderful point. Let's move ahead to the next meridian, that is a small intestine meridian, and the most important point will be these. So let's start with the point number 1, that is small intestine 6. Small intestine 6 is the G cleft point of the small intestine meridian, or the medical emergency point of the small intestine meridian. Look at this wrist. अगर हमारी कलाई से हम जानते हैं इस हड्डी का नाम है रेडियस बोन. द नेम ऑफ दिस बोन इज द रेडियस बोन एंड द नेम ऑफ दिस बोन इज अल्ना बोन. So this point is located in between the radius and ulna, but on the border of ulna. Okay, now look at my hand. अब मेरा हाथ देखिए एक बार. अगर इस पॉइंट को आपको ढंग से ढूंढना हो, if you want to search this point, so this is the perfect position. If you want to search this point, if you want to search this point, then this is the perfect position. Why? Because in this position we can feel this depression very properly. So now first you have to go toward this bone, because the name of this bone is ulna. So this bone is ulna and the upper bone is radius. इस नीचे की हड्डी का नाम है ulna, and we can feel the protrusion here. This is called the styloid process of the ulna. इसका नाम है ulna का उभरा हुआ, or we can tell the styloid process of the ulna. So now from this, if we go down in the depression, so this is the location of small intestine 6. अगर हम इससे नीचे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, so this is the location of small intestine 6. I will show you the image.
1 minute. So look at once again. So look at the location of this ulna bone. This is the ulna bone, and we can feel that this elevated part. So actually this is the ulna bone and this is the head of the ulna. ये ulna का सिर है. इसी के नीचे यहाँ पर जो डिप्रेशन फील होगा on the border of ulna, that is the small intestine 6, and it is a medical emergency point or the G cleft point. That is the medical emergency point or the G cleft point of the स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन. ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का जी क्लेफ्ट पॉइंट है और मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है. तो क्या यूज होगा इसका? यूज ये होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे इधर से. तो गर्दन में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, इफ समवन इज हैविंग neck pain, shoulder pain, pain anywhere in the root of the small intestine meridian, we can stimulate this small intestine 6 point. Not only this, small intestine meridian crossing the neck, and this is the small intestine 18, and this is the small intestine 19. So if any problem in the eyes, we can treat the small intestine meridian. If any problem in the ear, we can treat the small intestine meridian, and small intestine 19 will be the last point of the small intestine meridian. I will show you the image of other point shortly. अभी मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है. कानों में सडनली कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है पूरे रास्ते का. So small intestine 6 is the very wonderful point because this is the G cleft point. Okay, so now इसके बारे में क्या हमें पता होना चाहिए? Number one, we should have the idea how can we feel the point properly. If you keep your hand on the chest, then you can feel the clear depression. Number two, small intestine 6 is the G cleft point. Number three, it is found just radial to the head of ulna. ये हमारी ulna है और इसका head है इसके radial side में. So just radial to the head of ulna. Radial means toward the thumb. Radial का मतलब thumb की ओर. Yeah, it's a very good point for the vision. Definitely, it's a very good point for the deafness. Yes, right, you're right. Okay, fine. So small intestine 6 was the G cleft point. Let's proceed and see the next point. So now we are coming to the next point, that is small intestine 9. Small intestine 9, let's see the location. So look at the location of the small intestine 9 point. Look at here. So this is the axillary crease. This is called axillary crease. Now from the axillary crease, if we go one tune up, from the axillary crease, if we are going one tune up, then this is the location of small intestine 9. ये हमारी SI9 की लोकेशन है. As per the TCM, only the indication that is shoulder pain. That's it. TCM के अनुसार केवल एक ही चीज याद रखना, दो तीन चीजें याद रखना है. नंबर वन कि एक्सिलरी क्रीज से एक चुन ऊपर होता है और दूसरी बात कंधे के दर्द को ठीक करता है. Just remember two things as per the TCM. One tune up from the axillary crease and second good for shoulder pain. That's it. But as per the master tool, if you blood late from the small intestine 9, even it will help during the snack whiting. So it's a very good point for the poison because small intestine 9 is helping the liver to fight with the poison because if someone is taking the poison, the person is dying because of the liver failure, hepatic failure, because liver is fighting with the poison. तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है जहर खाने से या फिर स्नैक पॉइजनिंग से, उसकी मृत्यु लिवर के फेल होने से होती है. और जब किसी व्यक्ति को कोई सांप और या जहरीला कीड़ा काट लेता है या कोई व्यक्ति जहर से मरने वाला होता है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन 9 के एरिया से ब्लड लेट करके लिवर को ताकत देते हैं. वी आर गिविंग पावर टू द लिवर. दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द मास्टर टंग. फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. For exam point of view, only two things.
Number one should up from the axillary crease. Number two, good for shoulder pain. That's it. So move to the next point. So next point will be small intestine. 1 minute. SI18. So now we are moving to the next point, that is SI18. SI18 is the excellent point. Why? SI18 is the very good point. Why? Because like we have solar in the body, हमारे जैसे शरीर में सोलर का स्थान है, ऐसे हमारे चेहरे में SI18 का स्थान है. Like if we want to balance the body, then we can balance with the solar. In the same way, if we want to balance the alignment of the face, we can balance with the help of SI18. So SI18 is the solar of the face. So what we have to remember, the first thing we have to remember, number one, the SI18 is in the line of eyes, the lateral part of the eyes. तो पहली बात हमें याद रखनी होगी कि SI18 कहाँ होता है. हमारी आंखें जहां खत्म होती हैं उसकी lateral crease से if we go down, so this is the point. Number two, यहां पर जो बोन है उस बोन का नाम है maxilla bone. The name of this bone is maxilla. Okay, 1 minute, I will show you the image. और उसके बगल में दूसरी बोन है जिसका नाम है, I will show you in the image. So we are having two bones here. One is the maxilla, one is zygomatic. Let's see now. So look at this image. If you are coming below the eyes, so this is the maxilla bone. इस हड्डी का नाम है maxilla. Now this is the zygomatic bone. ये इस हड्डी का नाम है zygomatic bone. So when we are coming from the corner of the eyes, so we go down. So this is the point just below the zygomatic bone. ये हमारी zygomatic bone के ठीक नीचे पाया जाता है जिसका नाम है small intestine 18. Now the most important thing is this point is very wonderful for eyes. So the question is this, why this point is good for eyes? Because it is not meeting with eyes. ये बिंदु हमारी आंखों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि आंखों से तो मिल नहीं रहा है. So the answer is this: from the small intestine 18, one branch is coming out and meeting with the partner channel, that is the urinary bladder meridian. So that's why SI and UV are having connectivity. So small intestine meridian and especially the small intestine 18 is a very good point for the eyes as well as the facial paralysis. अगर किसी को Bell's palsy है, Bell's palsy or the facial paralysis, so SI18 is the wonderful point for the face. So SI18 can be considered as a local point. तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी? नंबर वन कि जाइगोमेटिक बोन के नीचे होता है. नंबर टू, हमारी आंखों की लेटरल कैंथस की लाइन में होता है. नंबर थ्री, ये आंखों के लिए अच्छा है क्योंकि यहां से एक ब्रांच निकलकर यूवी मेरिडियन से मिलती है. नंबर फोर, इट्स ए सेंटर ऑफ द फेस. Clear? But for you, what is important? For you, just one thing is important. Who is the local point of face? Answer SI18. Who is the good point for facial paralysis or the Bell's palsy? SI18. कि हमारे चेहरे का लोकल पॉइंट कौन होगा? आपको ध्यान रखना है SI18. और बेल्स पाल्सी में कौन सा पॉइंट काम करेगा? SI18. बस इतना ही. और आंखों की लेटरल लाइन से नीचे, ये इतना भी जानने की जरूरत नहीं है, बस लोकल पॉइंट है, इतना ही जानना होगा. Now from the SI18, then we are going to the SI19. SI19 is the last point of the small intestine meridian, ending just in the anterior part of the ear. हमारे कानों के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरिडियन खत्म होता है. यही कारण है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का प्रयोग कानों के लिए भी करते हैं. यही कारण है कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन 6 का प्रयोग, मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट का प्रयोग हमने
कान के लिए भी किया। अब इसमें हमें क्या बात याद रखनी होगी कि कानों के लिए कौन सा लोकल पॉइंट होता है, तो हमें पता होना चाहिए SI19 इज द लोकल पॉइंट फॉर ईयर। लेट्स सी द अदर इमेज, लुक एट हियर। So look at this image. So SI19 is the point, it is the local point for ear, SI19. And it is the last point of the small intestine meridian. ये हमारे small intestine meridian का आखिरी बिंदु है. So it's a very good point for the deafness, tinnitus, ringing sound in the ear. कानों में होने वाली अलग अलग बीमारियों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. So this was the description of small intestine meridian. Let's move to the next meridian, that is pericardium. Pericardium meridian में दो ही पॉइंट हमारे काम के, pericardium 6 and 7. So this is the हमारी ये wrist crease है, this is the wrist crease. The central of wrist crease, that is pericardium 6. And if we go to chin proximal, that is pericardium, sorry, the central of wrist crease, that is pericardium 7. हमारे सेंट्रल रिस्ट क्रीज का सेंट्रल पॉइंट होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियम 7. हमने आपको बताया था कि हार्ट 7 का काम है मन को शांत प्रशांत करना, उसी तरह से पेरिकार्डियम 7 का भी काम है मन को शांत प्रशांत करना. हमने बताया था कि हमारी कलाई पर जो बिंदु पाए जाते हैं उन्हें हम सोर्स पॉइंट कहते हैं, चाहे वो हार्ट 7 हो, पेरिकार्डियम 7 हो, लंग 9. तो ये पेरिकार्डियम 7 भी हमारा सोर्स पॉइंट है. तो अगर हमें हार्ट की ताकत बढ़ानी है तो हम हार्ट 7 पेरिकार्डियम 7 दोनों को टोनिफाई कर देंगे, और मन को शांत प्रशांत करना हो, नींद लेके आना हो, तो दोनों पॉइंट को साइडेट कर देंगे. तो जो काम हार्ट 7 करता है वही काम पेरिकार्डियम करता है, 7 करता है. सो बोथ पॉइंट डूइंग द सेम वर्क, same action done by both the points. Whether we talk about the heart 7 point or we talk about the pericardium 7, both point doing the same action. And the pericardium 7 is very important point. Why the pericardium 7 is good point? Number one, it is a source point. It's a source point. Yawn source point means source point. तो पहली बात है कि हमारे yawn source point है. Number 2, ये कहां होता है? What is the location? तो हमारे दो टेंडन है यहाँ पर. We are having two tendon here. So between the two tendon होता है. इन टेंडन्स के नाम क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा. ये हमारे दो टेंडन के बीच में होता है. तो कभी कोई पूछे कि बताइए हमारे ये दो टेंडन के बीच में कलाई पर कौन सा बिंदु पाया जाता है, तो आंसर होगा पेरिकार्डियम 7. पेरिकार्डियम 7 इज लोकेटेड ऑन द मिड ऑफ रिस्ट बिटवीन दीज टू टेंडन्स. लेकिन हम पेरिकार्डियम 7 से अगर हम दो चुन प्रॉक्सिमल आ गए तो हम पेरिकार्डियम 6 पर पहुंच जाएंगे, और पेरिकार्डियम 6 भी हमारे इन दो टेंडन्स के बीच में पाया जाता है. एंड द पेरिकार्डियम 6 इज द एम्पिरिकल पॉइंट फॉर acidity and nausea and vomiting. The meaning of empirical point, we are using this point for thousand years. Even we don't know what is the cause, what is the reason. हमें नहीं पता कि क्यों काम करता है, लेकिन हमको तो पता भी है क्योंकि मास्टर ट्यूब ने एक्सप्लेन कर दिया क्यों काम करता है. लेकिन एम्पिरिकल पॉइंट का अर्थ है कि ये काम करेगा ही. तो जब हम इस पॉइंट को प्रेस करते हैं तो ये नोशिया वोमिटिंग को ठीक करता है. इट्स एम्पिरिकल पॉइंट फॉर द एसिडिटी, पेरिकार्डियम 6. तो पेरिकार्डियम 6 कहां होता है? इन दो टेंडन्स के बीच में होता है. इन दो टेंडन्स के नाम क्या है अभी हम आपको बताएंगे. और कलाई से कितनी दूर होता है? कलाई से ये 2 चुन की दूरी पर होता है. और पेरिकार्डियम 6 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम मेरिडियन. इट्स ए लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियन. और पेरिकार्डियम 6 हमारे चेस्ट का डिस्टल पॉइंट है. सो इट्स ए वेरी गुड पॉइंट नॉट ओनली फॉर हार्ट बट इवन लंग्स एंड एनी प्रॉब्लम हैपनिंग इन द चेस्ट. अगर आपसे पूछा जाए कि किसी को चेस्ट में स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो हम कौन सा डिस्टल पॉइंट प्रयोग करेंगे? पेरिकार्डियम 6. So whatever happened in the chest, we have to use pericardium 6 because it's a distal point of the chest cavity. It's a very good point for the heart. It's a very good point for the lungs. It's a very good point for any problem happening in the chest cavity, whether the skin problem or whatever the problem. तो पेरिकार्डियम 6 हमारा छाती का डिस्टल पॉइंट है. सो
हमारे पेरिकार्डियम मेरिडियन में हमारे 2 पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमें पता होना चाहिए. सो पेरिकार्डियम 6 एंड द पेरिकार्डियम 7. So now look at this image here. I will show you the tendon. हमने अभी अभी आपको बताया था. So look at the tendon in this image. So look at this image. ये हमारी कलाई है. We are looking the body from the front side. ये हमारी कलाई है. So this is the tendon. The name of this tendon is, so one tendon is this side and one tendon is this side. हमारी कलाई के फ्रंट साइड में जितने भी टेंडन पाए जाते हैं हम उनको फ्लेक्सर टेंडन कहते हैं क्योंकि हमारे हाथ को फ्लेक्शन करने में हमारी हेल्प करते हैं. सो दीज ऑल टेंडन आर कॉल्ड फ्लेक्शन टेंडन. सो वी आर हैविंग टू टेंडन्स हियर इन दिस इमेज. इट माइट बी नॉट क्लियर. वन इज फ्लेक्सर, वन इज palmaris longus एंड सेकंड इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. दो टेंडन पाए जाते हैं. 1 minute, I will show you. Yeah. So there are two tendon here. Okay, चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ यहाँ पर. Look at here. So we are having two tendon here. One is a palmaris longus. आपको टेंडन के नाम भी याद रखने होंगे. One is the palmaris longus. Means the tendon of palmaris longus. And the second, this side, flexor carpi radialis. So the tendon of flexor carpi radialis. तो एक तो रेडियलिस नाम से होगा क्योंकि यहां पर हमारी रेडियस नाम की बोन पाई जाती है, और एक होगा पामरिस लॉन्गस. तो यहां पर हमारे जो दो टेंडन्स होते हैं उन्हीं टेंडन के बीच में यह बिंदु पाया जाता है. लुक एट द इमेज इन माय हैंड. लुक एट हियर. ये देखिए. सो वी कैन फील द टू टेंडन हियर. द वन टेंडन इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड वन टेंडन इज पामरिस लॉन्गस. इनके बीच में हमारा पेरिकार्डियम 6 होता है, और अगर हम कलाई पर पूछें तो पेरिकार्डियम 7 होता है. So only 2 points are important in the pericardium meridian. अगर आपको एसिडिटी को कम करना है तो आपको सेडेट करना होगा, और आपको ब्लड प्रेशर को कम करना है तो भी सेडेट करना होगा, और आपको बीपी को बढ़ाना है तो आप इन्हीं को टोनिफाई कर दीजिए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर आपको हार्ट बीट को कम करना है तो सेडेट करिए. हार्ट बीट को तेज करना है, अगर हार्ट बीट ऑलरेडी कम हो गई है तो टोनिफाई करिए. अगर हार्ट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करना है तो टोन करिए. हार्ट की फंक्शनिंग को कम करना है तो सेडेट करिए. एसिडिटी के लिए, वॉमिटिंग के लिए, नौशिया के लिए, एसिडिटी के लिए स्पेशली आपको सेडेट करना होगा. लेकिन जब आप नौशिया के लिए ट्रीट करें तो देख लेना कहीं लो बीपी तो नहीं है, क्योंकि सेडेट करने से बीपी कम हो सकता है. क्योंकि पेरिकार्डियम 6 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द चेस्ट. So now, okay, so moving to the next. तो चलिए मैं आपको अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा, दिमाग का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी हियर. Look at this image. Now we are learning extra points. Extra point EX. So we are learning extra point or EX. So हमें कौन कौन से पॉइंट समझना है. हमें पहले 1 2 6 7 8. तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं. 1 2
6, 7, 8 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी नाउ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जिसे हम कहते हैं EX1। EX1 वही बिंदु होता है जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं। So this is the point where we are putting the bindi, especially females. So this is the point EX1 and it's a very good tranquilizer point. ये हमारे शरीर का एक बहुत ही शानदार ट्रैंकुलाइजर पॉइंट होता है और सेडेटिव पॉइंट होता है जो मन को शांत प्रशांत करता है। बट वी आर नॉट स्टिमुलेटिंग दिस पॉइंट विद द इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। हम इस बिंदु को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं देते क्योंकि इस बिंदु पर वैसे ही बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। This bindu having tremendous energy. Even if you close your eyes and meditate on your third eye, you will feel lots of zigzag movement here. This is the very, very moving chakra here, the third eye. So we can stimulate this point with the color. We can put the needle here, but we don't do electric stimulation. Even we can do the moxibation here. हम यहाँ पर मोक्सा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इस पॉइंट को कलर लगा सकते हैं, बहुत शानदार है। लेकिन हम इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं देते। अगर आपने दे दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया, कुछ ऐसा हो गया, ऐसे कुछ बिगरस नहीं होगा। बट नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। ओनली निडल इज इनफ, even the color is enough. So this is the point EX1. What is the indication of EX1? EX1 point is a very good point for epilepsy, very good point for all the mental disorder. और EX1 के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर 1, ये पॉइंट हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। सो द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द आईब्रोज। नंबर 2, सेडेटिव पॉइंट। ओके, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कि हमारे आईब्रो का मीडियल पॉइंट कौन सा है, सो विच इज द मीडियल पॉइंट ऑफ द आईब्रो, देन इट विल बी यूरिनरी ब्लैडर 2। द मीडियल पॉइंट ऑफ द आईब्रो, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर 2। बट द सेकंड क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ द आईब्रोज, मिड पॉइंट ऑफ द आईब्रोज, दैट इज EX1। और ये पूछा गया कि बताइए कि द पॉइंट इन द mid of eyebrow, point in the mid of eyebrow. So this is the eyebrow and the point on the mid of eyebrow, that is EX3. Remember EX3 or U ya O, U ya O. This is a very good point for blurred vision. So remember this thing. But it's a very good because EX3 is not in your syllabus. आपके syllabus में नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मिड पॉइंट पूछा है तो आपको देखना होगा कि या तो EX1 पूछा होगा या UB2 पूछा होगा। सो द मीडियल पॉइंट ऑफ द आईब्रो विल बी UB2 and the midpoint of the both eyebrows, that is EX1, and EX1 is the very good point as a tranquilizer. EX1 is a very good point for all the mental disorders, for the Parkinsonism, epilepsy, whatever the mental disorder, we can use EX1. Second, now what is EX2? EX2 extra point 2. तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं extra point 2. So look at this image. तो ये हमने समझ लिया हमारा EX1। अब हम समझ रहे हैं EX2। तो EX2 कहां होता है? चलिए इसी इमेज में देखते हैं। EX2 is located on the side here. If you go one chun away from your eyes, अगर आप अपनी आंखों से one chun पीछे जाते हो तो आपको यहां पर एक डिप्रेशन मिलता है, इसका नाम है EX2 और द अदर नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ताई यांग। जहां पर बिंदी लगाई थी इस बिंदु का नाम है यिनटांग। दिस इज द यिनटांग एंड द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ताई यांग। रिमेंबर दिस नेम। The point where we are putting tilak or bindi, that is yintang, and the point where the one chun away from the eyes, that is tai yang. Okay, so what is the importance of tai yang? Is tai yang ka importance kya hai? So look at here. So mainly you have to remember what. So this is the point tai yang. अगर आंखों से आप बंचुन पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा तायांग और एक्स्ट्रा 2। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर हेडेक हियर।
temporal headache. It's a very good point if any problem happening here like the trigeminal neuralgia. अगर चेहरे पर न्यूरल्जिया हो रहा है, चेहरे पर पेन हो रहा है, तो ये बिंदु बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका नाम है ताई यांग, और ताई का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी वो बिंदु जहां पर बहुत ज्यादा यांग अवेलेबल है। आपने इस बिंदु को ट्रीट किया तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के पेन को कम करने में मदद करेगा। इट्स ए लोकल पॉइंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। सो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मींस देयर आर 3 नर्व्स। हमारे ब्रेन में 12 नर्व होती हैं। वी आर हैविंग 12 cranial nerve in the brain, and the 5th number nerve is called trigeminal nerve. और ट्राइजेमिनल नर्व को हम ट्राइजेमिनल नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच आंख के ऊपर जाती है, एक ब्रांच ऐसे आती है, और एक ब्रांच नीचे वाले जबड़े पर जाती है। ऊपर वाली ब्रांच आंख को जाती है जिसे हम ऑप्थेल्मिक ब्रांच कहते हैं, बीच वाली ब्रांच को मैक्सिलरी ब्रांच कहते हैं, नीचे वाली ब्रांच को मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं। जब ये दर्द करता है तो EX2 को स्टिमुलेट करते हैं। सो वी आर स्टिमुलेटिंग EX2. So EX2 is a very good point for the pain of the trigeminal nerve. ये हमारी ट्राइजेमिनल नर्व के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है EX2। और सिर दर्द के लिए अच्छा है, और इसका नाम है ताइयांग, और इसका नाम है यिनटांग। Okay, let's move to the point number next. Yeah, definitely we can use it for all the facial problems, but yeah, definitely we can use for the facial tics as well. Yes. So let's move to the next point. अब हम बात करते हैं एक अगले बिंदु की जिसका नाम है EX6. That is a very great point. EX6. So look at this image. And we know the location of DU20. हमारा DU20 यहाँ सिर पर होता है. That is the location of DU20. From the DU20, if we go one chin anterior, one chin posterior, one chin right, and one chin left, one chin back, one chin front, one chin right, one chin left. So this is the 4 point. So these 4 points together are called EX6, and the other name of these points are 4 spiritual wise men. 4 spiritual wise men यानी 4 बुद्धिमान लोग। और इनका काम क्या है? चाहे हम बात करें DU20 की, ये ट्रैंकुलाइजर पॉइंट है जो मन को शांत और प्रशांत करता है, और जितने भी हम इसका प्रयोग सेडेशन के लिए करते हैं, और EX6 भी मन को शांत और प्रशांत करता है, इसका प्रयोग भी हम सेडेशन के लिए करते हैं। So DU20 and the EX6 are point we are using for the sedation purpose. So these are the wonderful point we are using for the sedation purpose, whether the DU20 or the EX6, and the EX6 is the wonderful point for epilepsy. तो जब भी किसी को इपिलेप्टिक फिट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम 4 निडल लेते हैं और चारों निडल हम DU20 की तरफ मुंह करके लगा देते हैं. We can put the 4 needle facing toward the DU20. So that is EX6. Okay. We are not giving electric stimulation on this part. हम यहां पर भी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं देते. अगर आपके सामने 2 ऑप्शन रख दिए कि यहां और यहां, तो भी भाई इसको तो कभी मत देना. ये तो सबका बाप है, ये सबका बाप. इसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र. इसको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कभी मत देना. इसको टोन कर देना, मोक्सा कर देना, इसको ब्लड लेट कर देना, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देने की जरूरत नहीं है. ओके, सो नाउ दिस वाज द EX6. EX6 हम समझ गए. द मीनिंग ऑफ EX6 is the very great tranquilizer point. So whenever you want to tranquilize the mind, you can keep the finger here and the person will go sleep within 1 or 2 minutes. We are using this point in the मर्म थेरेपी. हम मर्म थेरेपी में इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, और हमने अनुभव से पाया है
कि हम यहाँ रखते हैं हाथ, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, और रखते रखते जैसे यहाँ पहुंचते हैं और बस यहाँ 1-2 मिनट हाथ रखते हैं तो चालू हो जाता है खर्राटे, snoring the patient as soon as we are keeping the finger on the D20. So D20 is the very very good point for as a tranquilizer. क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो अपना पर्सनल नेटवर्क है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, वंडरफुल। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट। लुक एट हियर। तो हमने देखे हमने 3 बिंदु देखे। हमने पहला पॉइंट देखा EX1, हमने दूसरा बिंदु देखा EX2, और तीसरा बिंदु हमने देखा, हमने 4 बिंदुओं को देखा 1 2 3 एंड 4। वो हमने 4 बिंदु देखे थे ऊपर, और उसको हमने नाम दिया EX6, 4 points. Now let's move to the next point, that is near the ear. ये कान है हमारा, कान के पीछे के खड्डे के पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल वार्मर 17। This point is called triple warmer 17. From the triple warmer 17, if we go one chun back, that is the location of EX7. ये हमारे EX7 की लोकेशन है। अगर हम ट्रिपल वार्मर 17 से एक चुन पीछे चले जाएं तो हम पहुंच जाते हैं एक शानदार बिंदु की ओर जिसका नाम है EX7। EX7 हमारे दिमाग का कचरा निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। कई बार हम बोलते हैं ना, तेरे दिमाग में कचरा भरा है, उस कचरे को नहीं निकालेंगे, ये हमारे दिमाग के लिम्फ को ड्रेन करेगा, लिम्फ। सो इफ यू वांट टू ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेन, दिस इज द वेरी गुड पॉइंट EX7। हमारे सिलेबस में है क्या ये वाला? आई डोंट, विल सी। हाँ, EX7, 6, 7, 8 तीनों है, 7 है, 8 भी है। यस इज राइट। ओके, so EX7 is the very good point for removing the kachra from the brain, removing the lymph from the brain, lymph drainage. So if you want to clean this, you want to lighten this part, you want to lighten your brain, your ear, your anywhere this part, if you want to drain the lymph, then use EX7 point. It's a wonderful point. Let's see the image once again. एक बार फिर से इमेज देखिए। हमारे ट्रिपल वार्मर 17 से 1 चुन पीछे पाया जाता है और इसका नाम है EX7। ये हमारे सिर के पूरे लिम्फ सिस्टम का पॉइंट है। दिस द पॉइंट ऑफ लिम्फ सिस्टम ऑफ द हेड रीजन। अब चाहे आंखों की प्रॉब्लम हो, चाहे कानों की प्रॉब्लम हो, चाहे आंखों में कैटरेक्ट हो जाए, चाहे कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, और ब्रेन में कोई भी बीमारी हो जाए, any problem happening anywhere in the brain, any problem happening anywhere in the sense organ in the brain, we can use EX7. It's a wonderful point which is 1 chun back from this depression. ये खड्डा है, इस खड्डे का नाम है ट्रिपल वार्मर 17, और इस खड्डे से 1 चुन पीछे गए तो दिमाग का कचरा निकालने वाला बिंदु है, which will expel all the toxin out from the brain. Now definitely all the points on the back side of the ear, they are bringing peace in the mind, they are bringing sleep. जितने भी पॉइंट कान के पीछे होते हैं, आप ऐसे भी करोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और आपको हल्की हल्की नींद आना चालू हो जाएगी। ये पॉइंट बड़े गजब के होते हैं, ये पूरा मन शांत कर देते हैं, है ना। जैसे गाय को देखा होगा, गाय को आप ऐसे हाथ घुमाओ तो गाय बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे किसी इंसान को आप यहाँ पर हाथ घुमाओ, घुमाते रहो, धीरे धीरे वो मना नहीं करेगा, क्या करते रहो, थोड़ा और करते रहो। और एग्जाम के समय कोई करे तो बड़ी दुआएं निकलेंगी, क्योंकि इतना स्ट्रेस बढ़ गया हार्ट में, कोई तो है जो हमारे हार्ट का तनाव निकालने वाला। सो EX7 इज द वेरी गुड पॉइंट which is 1 chun back from the triple warmer 17. Now if we are coming back now from the EX7, make 2 point, half chun this side and half chun this side. अब हम EX7 से 2 पॉइंट बना दें, हाफ चुन ट्रिपल वार्मर 17 की ओर
और हाफ चुन दूसरी ओर, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं EX8 और पीछे वाले बिंदु को बोलते हैं हम EX9। अब EX9 तो हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम 8 की बात जरूर करेंगे। EX8, we will talk about the EX8. So you can see the sequence। अगर आप सीक्वेंस की बात करें तो आपको पहले मिलेगा ट्रिपल बॉर्मर 17 और फिर आपको मिलेगा EX8 और फिर आपको मिलेगा EX7। So the distance between triple boromer 17 to the EX8 is half chun, and the distance between EX8 to the 7 is half chun। तो हमने इस तरह से देखा कि हमारे ट्रिपल बॉर्मर 17 से अगर हम आधा आधा चुन पीछे जाते हैं तो हमें पहले 8 नंबर का पॉइंट मिलता है। हम अक्सर लोगों को ऐसे याद कराते हैं, ऐसे याद करो कि देखो यह है ट्रिपल बॉर्मर 17, दिस इज द ट्रिपल बॉर्मर 17। नाउ काउंट, add 1 and 7, now this is the 8, so this is the EX8, and what is left? EX7। So triple boromer 17, EX8 and EX7, half chun distance। So now the first question, tell me the distance of EX8 from the triple boromer 17। आंसर should be half chun। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ EX8 कहां होता है, कितनी दूर होता है ट्रिपल बॉर्मर 17 से, तो आपको बोलना होगा आधा चुन की दूरी पर होता है। एक चुन की दूरी पर तो 7 नंबर आ जाएगा। और अब इसका क्या मतलब है? EX8 is the very excellent point for sleep। अगर आप पूछें कि इतने सारे पॉइंट है कान के पीछे, EX ट्रिपल बॉर्मर 17 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 9 भी है, बताओ सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है नींद लाने वाला? तो मैं बोलूंगा 8 नंबर का पॉइंट। 8 नंबर का पॉइंट सबसे बेहतरीन पॉइंट है। 8 number point is the very excellent point for sleep disorder, for the insomnia। नींद लाने के लिए इन सारे पॉइंट्स में सबसे बेहतरीन पॉइंट है EX8। सो वी आर यूजिंग EX8 वेरी फ्रिक्वेंटली। तो आप से पूछा जा सकता है कि बताइए कि EX8 कहां होता है, आपको बोलना होगा आधा चुन की दूरी पर। कहां से? ट्रिपल बॉर्मर 17 से। सो EX8 इज हाफ चुन अवे फ्रॉम द ट्रिपल बॉर्मर 17। It's a very good point for the sleep। It's a wonderful point for the sleep। Okay, so now let's see the image of EX8 once again। Look at here। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, so look at here, तो हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा हुआ ट्रिपल बॉर्मर 17। ट्रिपल बॉर्मर 17 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर ईयर। कानों के लिए बड़ा शानदार बिंदु है। नेक्स्ट, it's a EX8। EX8 is very good point for insomnia and sleep and as a tranquilizer। हम ट्रैंकुलाइजर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जिस जिस बीमारी में भी आपको ट्रैंकुलाइज करने की जरूरत पड़ जाए, हम EX8 को प्रयोग करेंगे। EX8 is a very good sedative point। EX8 is a very good tranquilizer point। EX8 is a very good point for the insomnia। तो कहीं भी जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं है कि केवल नींद के लिए ही, किसी भी बीमारी में यूज कर सकते हैं। जहां भी मन को ट्रैंकुलाइज करने की जरूरत पड़े और इससे ही आधा चुन और पीछे चले जाओ तो मिल जाएगा EX7, जो दिमाग का कचरा निकालता है, विच इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर ड्रेनिंग द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेन। 7 नंबर का पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने समझा। अब हमारा अगला बिंदु है, हमने समझ लिया, हमने 1 समझा, 2 समझा, 6 समझ लिया, 7 और 8 समझ लिए। अब हम बात करते हैं 17 नंबर पॉइंट की। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जिसके बारे में हम बोल रहे थे, हमारे शरीर का सबसे शानदार अस्थमा पॉइंट। द ग्रेट पॉइंट फॉर अस्थमा, द ग्रेट पॉइंट फॉर अस्थमा। लेट्स सी नाउ। सो लुक एट दिस इमेज। हमारी ये रीढ़ की हड्डी, दिस इज द स्पाइन and this is the ending of spine, this is the ending of cervical vertebra। So we are having C1 to C7, total 7 cervical vertebra। Now this is the thoracic spine, ये हमारी thoracic spine है। We are having T1 to T12, total 12 thoracic vertebra। On the junction of cervical and thoracic, this is the location of DU14
or the governing vessel 14, which is the very good immunity point, which is the very good point for the fever. Immunity point and very good point for the fever. अगर हम सर्वाइकल और थोरेसिक का जंक्शन देखें तो हमारे इस जंक्शन पर इसका अर्थ है हमारे C7 और T1 के बीच में, on the junction of C7 and T1 we are having very wonderful point. The name of that point is governing vessel 14, which is the very good point for the immunity, which is the very good point for fever. Okay, तो हमने समझ लिया कि गवर्निंग वेसल 14 कहां होता है. अब हम गवर्निंग वेसल 14 पर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं. Now we are reaching on the directly on the governing vessel 14. So this is the location of governing vessel 14. Now, if we go half chun this side and half chun this side, remember 0.5 chun. This is a very important 0.5 chun. अगर हम गवर्निंग वेसल 14 से आधा चुन इधर आधा चुन उधर जाते हैं तो हमें मिलता है EX17. EX17 is also called Ding Chuan or asthma point. Asthma point. So this is the location of Ding Chuan EX17, which is the great asthma point, जो हमारे अस्थमा के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. इसमें आपको बातें क्या क्या याद रखनी होंगी. नंबर 1, पहली बात आपको याद रखनी होगी कि इसका नंबर 17 नंबर का पॉइंट है. 17 नंबर का पॉइंट है. 70 नंबर पॉइंट. नंबर 2, it is at the level of governing vessel 14. Number 3, it's just a half chun. ये आधा चुन की दूरी पर है. गलती से एक चुन और 1.5 चुन मत कर देना. आधा चुन की दूरी पर है, बिल्कुल बगल में है. That is the Ding Chuan और EX17 wonderful point that is called Ding Chuan. और ध्यान रखिएगा Ding Chuan अलग होता है और Ding Chan अलग होता है. दोनों अलग अलग पॉइंट है. ये हमने बात करी Ding Chuan की. हम आपको चलो Ding Chan भी दिखा देते हैं. एक मिनट रुकिए. अभी हम अभी कभी Ding Chan देख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए. ये हमारा घुटना है. दिस इज द नी. And from the midpoint of the knee, if we are going 3 chun up, this is the location of Ding Chan. ये हमारा Ding Chan है. 3 chun up. लेकिन जब हम बोलेंगे इसे Ding Chuan तो मामला बदल जाएगा. चू यू का अंतर है. Ding Chuan तो ये अस्थमा का पॉइंट बन जाएगा और ये फिर EX17 बन जाएगा. तो Ding Chan हमारे पैरों में होता है. Ding Chan found in the legs. 3 chun up from the midpoint of the knee. और Ding Chan का काम है, अगर आपको सामने से पैर उठाना है, if you want to lift your leg from the front side, that is called flexion. अगर आपको फुटबॉल को किक मारना है तो फुटबॉल को किक मारने के लिए आपको पैर को ऊपर उठाना पड़ेगा. If you want to kick the football, then you have to lift the leg up. But you are not able to do this action, then stimulate the Ding Chan. Ding Chan will help you because Ding Chan will help you to pull the leg to the front side. That is called flexion of hip. इसे हम पैर को ऊपर उठाने को हम कहते हैं हिप का फ्लेक्शन. लेकिन जब घुटने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं द एक्सटेंशन ऑफ द नी. फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए. टेटाइज वालों को तो सबको पता है और सरफेस एनाटॉमी वालों को भी पता है. हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर करके पका डाला था सबको 10 दिन. लोगों ने बोला अब मत बोलो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अब आगे की बात करो. तो टेटाइज वालों को सब पता है, लेकिन इसलिए अब मत बोलना. अब मैंने आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझाया तो टेटाइज वाले खड़े हो जाएंगे अब भी कभी. So flexion of hip means lifting the leg up. That is called flexion of hip. कि आपको फुटबॉल को किक मारने के लिए जो जो एक्शन की जरूरत पड़ेगी वो उसमें हम फ्लेक्शन ऑफ हिप करते हैं. लेकिन घुटना सीधा हो जाता है. घुटना सीधा हो जाता है. सीधा तो उसे बोलते हैं घुटने का एक्सटेंशन. ओके, सो नाउ तो डिंग चुआन और डिंग चान में फर्क समझ में आ गया सबको. कभी डिंग चान को मत लिख देना, अस्थमा का पॉइंट बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई. डिंग चान तो पैर में होता है. एग्जामिनर सोचेगा भाई अब पैर में ये कौन सा अस्थमा का नया पॉइंट निकल आया. तो डिंग चुआन तो हमारे यहां पर होता है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. डू नॉट do this mistakes. So this is the
डिंगचुआन, और ये है हमारा डिंगचान, डिंगचुआन, ये दिस इज द डिंगचुआन और पैरों में डिंगचान। चलिए अब हम आपको एक अगला पॉइंट बताते हैं, लेट्स सी हियर। नाउ आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी एक्सीलेंट पॉइंट। The number of that point is EX21. Let's see what is the number. Yeah, 21. Yeah. Now we are learning the point that is EX21. हमारा अगला बिंदु है जिसका नाम है EX21. ओके, तो पहले तो हम बताते हैं इनके नंबर क्या है, 21 भी है और कई किताबों में 28 लिखा है, लेकिन अभी आप 28 को भूल जाइए, पहले हम 21 की बात करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द 21। सो EX21 मींस 21 पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज द स्पाइन, दिस इज द स्पाइन। From the spine, if we go half turn this side and making the point, and half turn this side and making the point. So these points are half turn on both side of spine. हमारी spine के दोनों साइड होते हैं, और इसकी खोज एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था हुआ टूओ, हुआ टूओ। तो इन पॉइंट का नाम ही रख दिया हुआ टूओ। ओके, द मीनिंग ऑफ स्पाइन, द मीनिंग ऑफ स्पाइन, हुआ टूओ, इन पॉइंट का नाम है हुआ टूओ जियाजी। जियाजी का मतलब है स्पाइन के बगल में। द मीनिंग ऑफ जियाजी मींस जस्ट नेक्स्ट टू द स्पाइन। सो द पॉइंट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द हुआ टूओ एंड जस्ट नेक्स्ट टू द स्पाइन, सो वी आर टेलिंग देम हुआ टूओ जियाजी पॉइंट। अब ध्यान रखिएगा, इसमें भी बड़ी गड़बड़ वाली बात है, उसको ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूं। लुक एट हियर, ये देखिए, साइंटिस्ट का नाम था हुआ टूओ और स्पाइन के बगल में जिया जी। इस पूरे नाम में कहीं भी एन नहीं है, ध्यान रखिएगा, एन का हमने कोई प्रयोग नहीं किया। सो हुआ टूओ जियाजी मींस EX21 पॉइंट on the both side of spine, on the both side of spine। और अगर इसके अंदर मैंने एन डाल दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, हुआन, हुआन टू वन पॉइंट, हुआन टू वन पॉइंट, अगर मैंने एक एन डाल दिया, ये दो एन डाल दिए, तो ये पॉइंट बदल गया। ध्यान रखिएगा कि आपने कहा कि हुआ टूओ, हुआन अलग पॉइंट है और हुआ टूओ अलग है, तो एन को दूर रखना, एन आ जाए तो समझ जाना ये दूसरा पॉइंट हो गया। हुआन टू वन पॉइंट मतलब बटक में होता है, बटक्स में, उसका नाम है गॉल ब्लैडर 30, वो अलग पॉइंट है, हुआन टू वन। ओके, सो द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज हुआ टूओ जियाजी। इसमें एक भी एन नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगर और हुआ भी तो जियाजी नहीं होना चाहिए। जियाजी का मतलब है रीढ़ की हड्डी के बगल में जी। ओके, सो हुआन टू वन में कोई जियाजी तो है नहीं, तो आपने कहीं पढ़ा हुआन टू वन, तो बस हुआ हुआ करके आपने लगा दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। दोनों पॉइंट अलग है और दोनों आपके सिलेबस में है। गॉल ब्लैडर 30 भी है और ये EX21 भी है। सो यू शुड रिमेंबर हुआ टू जियाजी, these are 21 point. Let's count the 21 point. Let's count. Okay, so look at the spine. ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है, so this is the spine. Okay, so if we look at the spine, then we know this is the cervical vertebra, C1 to C7। इसको भूल इसको कुछ भी नहीं गिनना अभी। नाउ
Let's start the counting from thoracic vertebra. Okay, so T1 to T12. How many vertebrae? There are total 12 vertebrae. तो ये हमारी thoracic vertebra है. हर वर्टिब्रा के बाजू में एक एक पॉइंट, आधा आधा चुन की तरफ. सो दीज आर टोटल 12 पॉइंट्स ऑन द वन साइड. और फिर हम आ गए कमर में. नाउ वी आर रीचिंग टू द लोअर बैक. नाउ वी आर रीचिंग टू द लोअर बैक. इन द लोअर बैक वी हैव L1 to L5 5 लंबर वर्टिब्रास. हमारी 5 लंबर वर्टिब्रा होगी. तो सपोज दिस इज द लंबर वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, और हर लंबर वर्टिब्रा के बाजू में एक एक पॉइंट. सो 5 पॉइंट हो गए. दीज आर द 5 पॉइंट्स. नाउ वी आर रीचिंग इन द सैक्रल बोन. ये हमारी सैक्रल बोन है. और सैक्रल बोन में 4 छेद होते हैं. देयर आर 4 होल्स इन द सैक्रल बोन. दीज आर कॉल्ड सैक्रल फोरामेन. So 4 point around the 4 holes or foramen. So 4 point around the sacral bone. तो जरा काउंट तो करिए कितने हो गए. काउंट ऑल. जरा सारे काउंट तो कर डालिए. 12, 5 और 4 कितने हो गए. So there are total 21 who are to a GIG point. 12 around the thoracic spine, means 1 at the level of T1, second on the level of T2, third at the level of T3. In that way we are having 12 point around the 12 thoracic vertebra. तो 12 thoracic vertebra के बाजू में 12 पॉइंट, 5 लंबर वर्टिब्रा के बाजू में 5 पॉइंट, और सैक्रल फोरामिन के बाजू में 4 पॉइंट. 4 ही सैक्रल फोरामिन होते हैं. हो गए 21. अब भाई इन्होंने कितनी गलत काम किया. सर्वाइकल के साथ इन्होंने नाइंसाफी की ना, की कि नहीं. क्योंकि अब मान लो सर्वाइकल के पॉइंट को छोड़ दिया. अब सर्वाइकल के 7 पॉइंट को अगर जोड़ देते तो कितने हो जाते बताइए. सर्वाइकल के 7 पॉइंट अगर और हमने कर दिए होते तो कितने होते. 28. तो हमने सोचा यार सर्वाइकल के पॉइंट भी ऐड कर दो. तो ऑप्शन में अगर 21 ना हो तो 28 कर देना, और 28 ना हो तो 21 कर देना. सो देयर माइट बी ऑप्शन ऑफ name is EX21. That will remain same. Don't do name EX28. No, don't do like that. The name will remain same, that is EX21. But there are two concepts. Someone is telling there are only 21 points on one side, and some other author is telling there is 28 points, because we also have to count cervical. तो कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल 21 पॉइंट होते हैं, और कुछ लोगों का कहना है ये 28 पॉइंट होते हैं. आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए. क्लियर. कैसे हुए वो भी समझ में आ गया ना. ओके. ऑप्शन में ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा. और अगर दोनों ही आ जाए, 21 भी आ जाए, 28 भी आ जाए, तो क्या लगाओगे. टेल मी. तो कौन सा लगाया जाएगा. आप ही लोग बताइए हम कौन सा लगाएं. तो 21 लगा देना. 21. ओके. क्योंकि उसके नाम में ही छुपा है EX21 मींस 21 पॉइंट. लेकिन अगर ऑप्शन ना हो 21 का, 28 का हो तो 28 लगा देना. सो दिस इज कॉल्ड हुआ टू अ जीआईजी पॉइंट. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. इसका महत्व क्या है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हुआ टू अ जीआईजी पॉइंट. लेट्स सी नाउ. सो लुक एट हियर. सो द पॉइंट, there is a one disease that is called bamboo spine, or the ankylosing spondylosis. Ankylosing spondylosis एक बीमारी होती है जिसका नाम है बम्बू स्पाइन या एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस. क्योंकि रीढ़ की हड्डी बम्बू जैसी हो जाती है. ये ऊपर की और नीचे की हड्डी आपस में चिपक जाती हैं और एक बन जाती हैं. So we are stimulating these points in the bamboo spine and in the ankylosing spondylosis. Okay. और दूसरी बात है कि हम रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम में इनका प्रयोग कर सकते हैं. These are the local point for any problem of the spine.
ओके, सो दीज आर द लोकल पॉइंट। अब मान लो आपको कभी, if you want to treat someone locally, then you can always use this point EX21. Let's move to the next point, that is EX28. Look at here now. अब हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसका नाम है EX28. Look at the palm. These are the 4 points. 1, 2, 3, 4. The name of this point is EX28. इनका नाम है EX28. अब इन पॉइंट का इंडिकेशन क्या है? व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स? हम इनका प्रयोग कहां करते हैं? व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ दीज पॉइंट? अगर किसी को हाथों में नमनेस हो, हाथों में कोई दर्द हो जाए, हाथों की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वी कैन ऑलवेज यूज दीज पॉइंट एज ए लोकल पॉइंट if anyone is having any problem in the hands, especially if someone is suffering with the rheumatoid arthritis, with the gout and having some problem here, we can use this point. अगर किसी की हाथों की उंगलियों में गांठें बन जाएं और उसकी rheumatoid arthritis हो जाए, gout हो जाए, तब हम इन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी के हाथों में numbness आती हो, तब भी हम इन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। We can use this point for the numbness in the hands, for neuropathy of the hands, we can use it. Okay, so the other name of these point are Baxi. लेकिन बैक्सी याद रखिए, ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका नाम है EX28. Now the same point is available in the feet, but the number is different. अगर हम इसी पॉइंट को हम पैरों में जाके देखें, so let's see in the feet, there are also 4 points in the feet. These points also very good for the local problem, and especially these points are very good for the neuropathy. अगर किसी को पैरों में नमनेस आती है, न्यूरोपैथी होती है, तब इन बिंदुओं का हम प्रयोग बहुत करते हैं। इन बिंदुओं का नाम है EX36. These are called EX36. तो ध्यान रखिएगा, हाथों के पॉइंट का नाम है 28 और पैरों के पॉइंट का नाम है 36, और इनका काम है लोकल प्रॉब्लम को ठीक करना। They are working for the local problem, like someone is having numbness in the feet, pain in the toes, numbness in the toes, we can use these points. So this is the EX36. तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद इतना ही रखना है कि हमारी फिंगर के बे मार्जिन में कौन से पॉइंट होते हैं, तो आपको याद रखना है 28 नंबर, और पैरों के मार्जिन में कौन से पॉइंट होते हैं, तो आपको याद रखना है 36. Okay, so 28, 36. Okay, only 2 points left. Let's complete 2 more points. इनको हम देखो टॉन करना है कि सेडेट करना है, ये तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो हम उसके कारण तकलीफ हो रही है, तो हम उसे टॉन करेंगे। तो हमने ये सारे पॉइंट समझ लिए, हमारे बाकी हैं 32 और 33. ओनली 2 पॉइंट लेफ्ट. सो लेट्स सी नाउ. सो लुक एट दिस इमेज. हमारे ये घुटना है और घुटने की ये आंख होती है. सो द इनर आईज ऑफ द नी इज कॉल्ड EX32. So the inner eyes of the knee is called EX32. It's a very good point for the osteoarthritis of the knee. It's a very wonderful point for the osteoarthritis of the knee. अगर किसी को घुटने में आर्थराइटिस होती है, तो हम EX32 को स्टिमुलेट करते हैं. It's a wonderful point for the arthritis, especially osteoarthritis of the knee. All types of arthritis of the knee, it's a wonderful point, EX32. और हमारे घुटने की आंख में होता है. This is the point found in the knee eyes. This point is very famous point, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भी है. आपको इस पॉइंट की लोकेशन को याद रखना होगा. मैं अभी आपको इस पॉइंट की लोकेशन बता देता हूं. लेट्स सी नाउ. एक बार इस पॉइंट की लोकेशन देख लीजिए. लुक एट माय फीट. सो यू कैन सी द नी. हमारे घुटने की ये आंख है, ये बाहर की आंख है, और घुटने की अंदर की आंख है. वन मिनट.
सो लुक एट द नी, ये घुटने की दो आंखें हैं। तो बाहर की आंख को हम बोलते हैं स्टमक 35 और अंदर की आंख को हम बोलते हैं स्टमक 33। दिस इज कॉल्ड स्टमक 33, सॉरी स्टमक 32। So this is called stomach 32. We are using this point for osteoarthritis of the knee. हम चाहे नी का osteoarthritis हो, चाहे नी का rheumatoid arthritis हो, हम नी की कोई भी तकलीफ हो, इसे लोकल पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। नाउ दिस इज द स्टमक 35। हम ऐसा भी हमें पता होना चाहिए, ये जो बीच में कड़क चीज देख रहे हैं इसका नाम है टेंडन। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पटेलर टेंडन। पटेलर टेंडन, इसका नाम है पटेलर टेंडन। तो पटेलर टेंडन के अंदर जाओगे तो मिलेगा EX32 और इस पटेलर टेंडन के बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा स्टमक 35। नाउ दिस इज द स्टमक 35। फ्रॉम द स्टमक 35 इफ आई गो 3 चुन डाउन, दिस इज द स्टमक 36। अगर मैं स्टमक 35 से 3 चुन नीचे जाता हूं, ये मिलेगा स्टमक 36। और इससे मैं अगर 2 चुन नीचे जाऊं तो ये मुझे मिलेगा very wonderful point, the point for appendix, the point for appendicitis EX33. So this is the 32 and this is the 33. ये मेरा 32 पॉइंट घुटने के लिए और 33 पॉइंट appendicitis के लिए। कभी भी किसी को राइट साइड के एब्डोमेन में दर्द हो तो हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे फॉर द appendicitis। हमारे स्टमक 35 से 5 चुन नीचे होता है, यह हमारे स्टमक 36 से 2 चुन नीचे होता है। So from the stomach 35, if we go 3 chun, then this is the stomach 36, and we are going again 2 chun, then this is the appendicitis point EX33. इसे हम appendix का alarm point भी कहते हैं। So we are telling it the alarm point of the appendix. तो आपको क्या क्या याद रखना होगा इसमें? Let's see now. So remember this thing here. So look at in this image. So this is the knee. और नी का ये इनर पॉइंट है, दिस इज द EX30, EX32 एंड EX32 इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब के लिए घुटने का लोकल पॉइंट है। और ये बाहर का जो बिंदु है इसका नाम है EX35, ये भी घुटने का लोकल पॉइंट है। नाउ फ्रॉम दिस इफ यू गो 3 chun डाउन, दिस इज द लोकेशन ऑफ, सॉरी, from here if you go 3 chun down, so this is the location of stomach 36. Now from the stomach 36 we are coming just 2 chun down, so this is the point appendicitis point or EX33। इसे हम बोलते हैं EX33। इसे हम appendix का alarm point भी कहते हैं। So this is called the alarm point of the appendix. So look at here in this image. तो अगर हम पेट को देखें, अगर हम पेट को 9 भागों में बांट दें, 1 2 3, if we divide the abdomen in the 9 quadrant, तो इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं राइट इलियक फोसा, क्योंकि यहां पर नीचे हमारी एक बोन है जिसका नाम है इलियम बोन, एंड दिस क्वाड्रेंट इट इज कॉल्ड लेफ्ट इलियक फोसा। और यहां पर हमारा होता है, वी आर हैविंग अपेंडिक्स हियर, दिस इज द लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है, आपको ऐसा पता होना चाहिए कि नंबर 1 पेन इन द अपेंडिक्स, so the point will be EX33. Number 2, pain in the right iliac fossa, then also you have to write EX32। कि किसी व्यक्ति को राइट इलियक फोसा में दर्द हुआ तो भी आपको अपेंडिक्स याद रखना हो, तो भी आपको समझना होगा कि अपेंडिक्स की तरफ इशारा है। और वैसे तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं अपेंडिक्स पेट दर्द के,
तो चाहे लेफ्ट इलियक फोसा में दर्द हो, डॉक्टर बोलते हैं आजा तेरे को ऑपरेशन कर देते हैं, तेरे को अपेंडिक्स है, और ऑपरेशन करके अच्छी खासी कमाई करते हैं। इसीलिए मेडिकल बुक में लिखा है अपेंडिसाइटिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ द डॉक्टर। ये तो डॉक्टर का ब्रेड एंड बटर है, नाश्ता है, लंच नहीं है, ध्यान रखना। लंच तो होता है द सर्जरी, मेजर सर्जरी, उनका ब्रेड बटर सुबह का नाश्ता। और बाद में पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब दर्द तो अभी भी है। ओके ओके, सो देयर माइट बी सम अदर प्रॉब्लम, लेट्स डू मोर रिपोर्ट्स, लेट्स डू सीटी स्कैन, फिर और आगे रिपोर्ट कराओ। सो you should remember the right iliac fossa and EX33 डन। सो हमने अपने एक्स्ट्रा पॉइंट समाप्त किए। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, अब हम मिलेंगे फिर से जल्दी। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।